I'll give you my card. Oh, thank you. Absolutely. Thank you very much. Okay, help. No problem. So आज कुछ दे रहा है ट्रेडर टेलीग्राम में कुछ खुद ही आएंगे ना अलर्ट जब टाइम उस पे पहुंचेगा। अभी तो प्राइस है दूर है तो 74 to 60 तो जब उसके करीब आएगी तो खुद ही पहुंच जाएगा। It's very good, sir, this one. Honestly, like if whoever doing like consistently $200, they'll definitely make Yeah. 100. Definitely 100. That's the goal. We want to make sure you get at least At $100. least 100 off, yeah. Few points. And this morning, the alert didn't come because it messed up last Friday because the areas changed. But if you took yesterday's extreme low, you're done already. Yeah, yesterday also I was like 10 minutes, I think 2 minutes before 4 o'clock. Yes. Market itna gir gaya. I made almost 10 points. Yes. I was just You doing just have to Bullnox. sit and wait. Sit and wait. जब हमारे जो ट्रायल मेंबर होते हैं हाँ जी ये जब मेंटरशिप उसके ऊपर जाते हैं तो इनके पास हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती। पता नहीं एक बंदे ने कल मुझे फोन किया कुछ स्पेसिफिकली आपसे मांग रहे होते हैं मुझसे। हाँ नहीं आपका नंबर वो एपेक्स स्टडी में पड़ा है। एपेक्स की स्टडी में नंबर पड़ा है आपका। अच्छा कहीं आपके एडवर्टाइज आप हो रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने अभी मेरा फ्री ट्रायल हो गया, मैंने कहा जब आप एक्टिव मेंबर हो जाओगे ना तो आप नहीं आप ट्रायल में भी दे सकते हैं, सेशन तो आप दें लेकिन उनसे उनको नो प्रॉब्लम वो मसला नहीं है। So 68 and the number is all right. Forex Factory, we are live. Let's see if we are live on Telegram. Let's do these. Live stream start होगी। Yep. So live stream is started. Let's take a look. So 46 minutes ago, we have alerts coming in. Let's put it on status. 50% now. He will save tariff, then he will go and fix it. It's annoying. So the price is 66. I think our alert should be coming soon, hopefully. Just watching the price. 66. We are at 67. Alert should pop up around 65 that you're getting ready. Let's see if this works for Friday. No problem. So anyway, if you're watching live, our area is coming. Our area of expected low is coming. So it's opening near expected low.
That is crazy. All right, forex factory speeches, new home sales, 10 o'clock. 9:35 कुछ Daily Nasdaq, Monday. We gotta look for Friday areas now. There you go. Monday's a holiday. So I just want to see. So today, base is up, pressure is up. Yeah, 21,130. All right, good morning, everybody. Let me just make sure I don't miss anything otherwise. All right, good morning, everybody. Friday, May 23rd, 9:05 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, in person as well as online. Let's take a look at Forex Factory. Nothing major at 9:35. We have speeches today, 4 or 5 speeches. And you have new home sales, all right, at 10 o'clock. What happened in the last 2 hours? I was watching live. Trump says now we're going to have tariffs on European Union, 50%, and market fell, which brought Apple down 3%. And so if you took yesterday's area of extreme low, that still gave you points. Our system did not send alert because Friday areas, we're still figuring out the improvements on that. Right now, the price is 57.69. Our area is starting at around the 60 zone for expected low. Since our area is starting at expected low soon, so I will give you soon. So expected low is coming around 65. When the price reaches 65, you should have the Telegram alert coming in. We'll see how it goes, but I'm keeping an eye on it. And when the price reaches, right now is 780. When the price reaches maybe 760, it should send out the alert for your Nasdaq. So price is opening very close to expected low for both markets. Let's look at the sessions. Let's look at the session. So we have 21,236 as a high. We have 20,727 as a low. So that is 509 points. And yesterday's area was, if I take a look at yesterday's area of Monday to Friday, it did get in of our extreme low area for our, yes. Okay. So just speeches and new home sales. So we're very close to expected low at the moment. So 245, let me double check a couple of things. 5760 is yes, right? 5760 is yes, that's where expected low is beginning. Okay. And night session low is 56. So 21,337, 21,113 for yesterday. All right, we'll go with the flow. So you place a buy order, right? Yeah, buy करना है सर, क्योंकि अब लेकिन मैं पहले 54 के 56 के देखेंगे. प्राइस शुरू हो रही है, एरिया शुरू हो रहा है 60 से लेके, आपका एरिया क्या है 60 से शुरू हो रहा है 45 तक. ये एक्सपेक्टेड लो है. अब वो 60 से भी वापस जा सकती है, यहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है, राइट? सो यू हैव टू काइंड ऑफ, so you suggest around
57, 56, start from 57. Yes. 56, okay. Good morning, sir. Good morning, Ji. Good morning जी क्या हाल है morning जी Good morning, Ji. job क्या हुआ Good morning. Good morning. Okay, let's see. So, what happens next? morning office जी Good morning, Ji. We are almost at expected low. For those joining now, we are very close to expected low. It already touched night session low is 57, 50, what is the night? 57.56. So our night low is 57.56. Night low is 57.56. At 65, you guys should get an alert automatically. At 65. morning sir Night high. Let's see, 67. $58.72. $58.72.
72 is the high for ES. And our expected low zone is from 60 to 45. Let's see. At 65, it should give us some alerts. Technically, 5760, right? Yes, yes. Wasn't that was weak earlier? नहीं वो कल रात का एक्सट्रीम लो था. हाँ तो अब अगर वो दोबारा टेस्ट होती है, थैंक यू बॉस, थैंक यू. अगर वो दोबारा टेस्ट होती है तो वो उसको देखते हैं. S3 is the plan. If we don't touch it, we can still play around. Meaning? The 57, 55 night touch was on. नहीं देखें अभी जो ट्रू एरिया बिगिन हो रहा है वो 60 से 45 है. वो 45 पे जाता है, 46 से आता है, वी डोंट नो राइट. लेकिन नाइट सेशन के करीब करीब लें. 60 से भी बाउंस हो सकता है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अभी इसका. 50 65 पे तो पहले अलर्ट आना चाहिए ना. 70 पे है हाँ वो तो, लेकिन सबसे जो मसला बड़ा हुआ है, ट्रम्प ने उस पे टैरिफ्स लगा दिए हैं यूरोप पे, और एप्पल गिर गया 3%, तो ये सब मार्केट नीचे गिरा लिया राइट. सो Your night time low was 57, 56, right? यस. So probably that's where. So for Nasdaq, I'm not taking the upper band. I'm taking the lower band. If it misses, misses. But there's so much market is in a free fall. So I'll start taking my risk. Maybe what is the number? Give me a second. Exactly, I'll tell you where I will take my Nasdaq risk. Because the number is from 650, 730 to 650. Let me double check for Nasdaq. So Nasdaq risk starts from 730 to 650. Let me see what I can do for Nasdaq. Because Nasdaq already went to 727. So let's see. It could go as low as 689 or 685. So that's the range I'm looking at. Give me a second. So yeah, 690 or 685. Let's keep an eye there. Let's see where, because we have a black candle on 240 minutes some time ago. Yeah, let's say 685 is my plan. From 9:30 हम ले सकते हैं yes पे नाइट सेशन देखें, एरिया भी गिर रहा है, नाइट सेशन भी गिर रहा है, तो बनना चाहिए. 57 6 पे ले सकते हैं. हाँ एक कुछ पॉइंट तो देना चाहिए है. 60 से 45 का अब गैप बड़ा है ना, तो अगर वो स्लिप्ड हुई, तो अगर आप 60 पे एंटर हो गए तो वो गिरती चली गई. तो मैं 930 पे एग्जैक्ट असेस करूंगा कि हमने नंबर क्या लेने हैं. लेकिन एरिया भी आ रहा है, टाइम भी ओपनिंग का है, अब पता लगे वो डायरेक्ट 45 पे जाए और वहां से बाउंस हो राइट. सो हाँ, लेकिन आग बहुत दूर से रही है ना, तो एटलीस्ट उसको कहीं रुकना चाहिए. अब एक्सट्रीम और एक्सपेक्टेड पहले तो ये 45 है ना, अब 45 से अगला 33 है, और 650 से 590 थोड़ा है गैप. तो एटलीस्ट 650 तक ये गिर सकती है. मैं जो पीछे निकाली है 240 की कैंडल, वो 690 तक गिरी हुई है. तो 690, 685, 670 माइक्रो घबराइएगा नहीं.
तो अगर 590 पे आ गई, 690 पे अगर आपने एंटर किया तो 100 पे एवरेज उस वक्त देखेंगे, बट डोंट गो yes again below. I'm taking below 55. There you go. My alert's starting to come. That's per. Why did it send it now? Current price, it got to 65 and then shot back up. Good. Oh, 45 to 60. You're right. Huh. So yes, so it got to, when it got to 65, it sent an alert. Good. System is working. Price is 65, yeah. निंजा ट्रेडर्स का ना शायद अकाउंट वो एक्सपायर हो गया. गो ninjatrader.com पे जाएं, नया अकाउंट बना लें. 56 पे मे बी हाँ, जो अब ये आपका सेल्फ असेसमेंट रिस्क होता है कि आप 5 माइक्रो लेंगे, 2 लेंगे, 1 मिनी लेंगे, तो उस हिसाब से ये सारा कुछ चलता है. तो ES तो 65 तक आ चुका है. जीमेल से करते हो ना सर? जीमेल भी ले लें, कुछ ले लें, चलता है. आपने मैसेज किया ना व्हाट्सएप? ठीक है, ठीक. वो क्योंकि वो खुला ना तो उसमें दिखा रहा था कि ये व्हाट्सएप पे करो एंड नहीं, पहले वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लें. खाली उसके 3 स्टेप्स हैं. उसके आपने आईडी निकालनी है आपने, तो वो आपने जाके 3 स्टेप्स हैं उसके, वो कर लें. ईमेल आईडी नॉट फाउंड इन आवर सिस्टम. नहीं, आपने स्टेप 1 नहीं फॉलो किया. ये सर आपका नंबर तो सही है मेरे पास. ये कोई और नंबर है? नहीं, वही नंबर है, लेकिन एजेंट को कुछ चाहिए, क्योंकि 4 बंदे रीड करते हैं ना, उनको कुछ आपसे आपकी टेलीग्राम की आईडी चाहिए. यूज करके ना दोबारा बना. 800 हो गया वो आपके माइंड को ये Another 8 मिनट रह गए मार्केट खुलने में, तो लेट्स सी इफ इट शूट्स अप और Find your Telegram ID. Successful product. You need to verify your email ID and Telegram. भी 900 तक हो गया ना, ठीक है. Link. पहला भी 900 पे हो गया, तो भी उस फैक्टर देगा ना. सर जो Nasdaq का एरिया है S2 है 2900 S2 का. Nasdaq का तो एक्सपेक्टेड लो की तरफ है जी चीजें, हर चीज 730 से 650, क्योंकि अगर आप चार्ट रिफ्रेश करें तो आज आपको फ्राइडे के आने चाहिए. परफेक्ट. अब मैं ये भिजवा देता हूँ आगे. Maybe 736 months. इसमें वहाँ पे करना है नोट रेडी फॉर लाइव ट्रेडिंग, स्टार्ट ए रिस्क फ्री. हाँ, स्टार्ट डे, नो नॉट फॉर लाइव ट्रेडिंग. सिमुलेशन. Correct.
So we're very close again to expected low. हो गया सर ये ठीक है टॉप डेस्कटॉप वेब अब निंजा ट्रेडर्स में जो लॉगिन करना है वो जो नई आईडी बनाई है आपने All the GF, they said when you place a trade, like buy or sell, they charge $2.79. Yeah, correct. And then if you sell $2.79, Yeah, the yeah. total is $5. Correct. Yeah, that's normal. Yeah. गोल्ड भी एक्सपेक्टेड हाई के नजदीक ही है गोल्ड उधर पहुंचा हुआ है मेरे गोल्ड के अलर्ट्स आते नहीं है अभी सिस्टम उन्होंने बनाया नहीं कि गोल्ड का नहीं अभी तो दूर है सर अभी तो गोल्ड का एक्सपेक्टेड हाई काफी दूर है सर वो 3371 है ना उसको टच करके वापस आए नहीं अभी नहीं हुआ 71 ये आया है ऑलमोस्ट 65 से 71 था एरिया ओके ये सारे तो है नहीं है अभी सिर्फ हम देख रहे हैं ये जितना एक्सपेक्टेड लो टच हुआ ना ईएस रसल डाउ ये सारा टच हुआ है नाइट सेशन लो में तो एरियाज उसके बाद आए हैं ठीक अब देखते हैं जी तो अभी के जितने एरियाज हैं दे आर ऑल वैलिड सर देयर स्टिल वैलिड गोइंग अप तो पहले अगर एक्सपेक्टेड लो से ऊपर जाती है तो पहले S2 रेजिस्टेंस बनेगी ना अब निचले फ्लोर से हैं तो अब वो ऊपर जाती रहेगी क्योंकि वो पहली दफा टच होंगे ना नीचे किस्सा आ रहे हैं yes expected no we can consider it done because आया the 28 देखें अभी खुली है मार्केट देखें कहां से कहां ले गए वो अभी तो S1 and S2 के बीच में ना सर प्राइस या नहीं सर एक्सपेक्टेड लो से जा रही है S2 की तरफ हाँ S1 में नहीं है मतलब वो नहीं जो ट्रू उसके अंदर है ना वो हमने पढ़ना है वरना आप गलत जज कर जाएंगे सिर्फ दो लेवल्स को देखें कि किसके अंदर है इस वक्त एक्सपेक्टेड लो और S2 के अंदर है या ये देखें यहाँ पर यहाँ मैं शॉर्ट में था कहीं पर थिंक आई वाज इन मैं इसमें देख रहा था जो 60 मिनट्स का था ना जिसमें लाइन दिखती है हाँ देखें अभी ये S2 और एक्सपेक्टेड लो के दौरान है जी 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 नॉट S1 नॉट S1 ये तो अभी ये करंट प्राइस ही चल रही 59 ये ES 500 का देख रहे हैं ना हाँ जी सर 5781 प्राइस है लाइफ Good morning, Bhajan. Long time.
Sorry, मेरा actually simulation is quite new, इसलिए वो पुराने दिखा. All right, market is officially open. Let's see which way it wants to go now. First mid-band was okay. Yeah. So that's done. So in 1 minute in the market, we're done our first trade. Are we 5 point close to? Not yet. Second mid-band is done. For 2 points. SRES. There you go. We got an alert automatically for both. $90. कितना फास्ट चला गया. हाँ ऐसा ही जाता है, ऐसा ही जाता है. मार्केट गिरती भी उसी तरह. Good morning. Good morning, Daniel. Long time, buddy. Welcome. But I watch you every day. So S2 alert got sent. There you go. ES alert got sent that you're approaching S2 from the bottom. So the image that came in is showing you the price is going towards S2. So that here, S2 would become as a resistance, not a support, coming from the bottom. So if anybody wanted to sell, they will sell at S2, not buy. Because remember, price is coming from the below, not from above. So it's not a support, it's a resistance. So if anybody wants to take a trade, I'm not taking, but S2 is there as a resistance. We're inside S2, which it touched and gave you a few points. Is S2 is 57.95, right, sir?
Now, S2 is done जी, हो गया जी. so now we should sell at a midpoint. हो गया सर, निकल गया. आया एरिया और डन हो गया. Oh, another midpoint. So S2 आया, आपके उसने टच किया 4-5 and it's done. Nasdaq का S2 उसने टच किया, कर रहा है. Nine 35 news है जी. हाँ जी, new home sales. No, 10 o'clock, right? 9:35. What news is? Oh, speeches. Speeches. No, 10 o'clock is the 10 o'clock is new home prices, medium impact. But S2 as a resistance worked and gave us 58 to almost a few points there. 57.97. So 9:30 ला लिया सी. 9:30 long. Sure. ठीक है, आपका S2 हो गया ना, done. Very good. Excellent. So what he just said, that price was coming from the bottom. We had an area. He took the 930 area, sold it, and then got out. So नीचे से भी जाए तो आपको वो रेजिस्टेंस बनेगी, ऊपर से आएगी तो सपोर्ट बनेगी. तो वो जो अलर्ट आया था वहां बाय नहीं बनता. Sir, I'm done for the day. Good. So market shot up 42 points straight back up after. So let's see. $30.20 mid-band is being tested right now. Let's see. Should come to at least 88. Let's see if it goes down to test one more time from S2. So price came from expected low, touched S2, and we are done officially. That area as well.
अब सर ये सपोर्ट टच उसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगा? नहीं नहीं, अभी देखते हैं पहले, अगर ब्लैक कैंडल उसके ऊपर गई ना, जी। फिर हम देखेंगे कि क्या होना है। ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड बननी चाहिए 30-20 में S2 के ऊपर, ओके। फिर वो सपोर्ट होगी। अभी तो रिट्रेस ले रहा है ये। सो अगर ये S2 सपोर्ट बन गई, फिर हमारा S1 बन जाएगा रेजिस्टेंस अगेन, क्योंकि छत नीचे से चढ़ रही है रेदर देन ऊपर से। जब पिवट्स पे खुलती है मार्केट मिडल में, तो वो एक्ट करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, राइट? बट लुक, द मार्केट ओपन एक्सपेक्टेड लो, really low, so it's climbing up. So first roof S2, second roof S1, third roof. So right now we are working in opposite, because sometime price will open at expected high. So SR2 will act as a support, then R1, then S1, then S2. So you have to understand how to read these areas properly. Because if you saw an alert that price, that's why we have an image going to you next. That image tells you, am I coming from the bottom or the top? So that image is kind of critical, quickly looking at it. So if you नहीं दोनों सेफ हैं, बात तो वही है। अब जिसने, मैंने S2 से फेंक दिया था MES 5 माइक्रो, मैंने 5 पॉइंट लिए, बाहर आ गया, राइट? सो बिकॉज प्रेशर इज अप, तो मैं लॉन्ग में रहूंगा आज, लेकिन ये इसने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। सो इट डिड वर्क एज अ रेजिस्टेंस, एंड लिटरली इट गेव यू गाइस एनीवेयर फ्रॉम, डिपेंडिंग, you entered 58 or 58.05, everybody is done. So even if you entered 5,800 the first attempt, it gave you 3-4 points. And if you sold it at 58.05, it still gave you plenty of points. And still, so S2 area is done. Expected low. It came close, but we'll see how it goes. So S2 coming from the bottom. If you sold at, what's the area for 930, like he said, he's got 30 points, 25 points done, right? So because price came from the bottom, he looked at what number I can sell. Sorry? 10 points. There you go. Reasonable. 10 points is plenty. If 5 micro, 10 points is $100, I believe. Yes. So सिर्फ अगर आप एरिया को उस तरह पढ़ना है कि कहाँ से आ रही है प्राइस, क्योंकि नॉर्मली सेंटर में खुलती है तो आप कहते हैं यार S1 आ गई, बाय कर लें, R1 आई, सेल कर दें। यहाँ आपकी मैकेनिक्स उल्टी हो जानी है। प्राइस खुल कहाँ रही है, रेंज आपकी बेस एंड रेंज के ना, तो प्राइस खुली एक्सपेक्टेड लो पे। तो जब उसने अलर्ट भेजा कि S2 आ रही है, सो S2 विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस। I've asked the developers if they can include. They said your guys will get more confused, so leave it and send an image. Image is better, because that image tells you the price is below the range or above the range. Agar below the range hai, so that image is, so that look, it's falling down. If you if you short it even from there, there you go. Above S2, he's done. Harsh, thank you. That's amazing. So let's see. I think it could make it as a support, but let's see. Time will tell. Right now, it's a bit of a divergence on, there you go, mid-band worked, and it is going down now. 97, 92. वो एरिया अब वो भी आने शुरू हो जाएंगे सून। मंडे से डाउ रसल ऐड हो जाएगी, एंड देन गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सो वेरी सून। सर स्टिल 57, 56 वैलिड है आपका नाइट। अभी एरिया तो नहीं टच हुआ एक्सपेक्टेड लो का। 65 में बोल रहा था ना, आप टच करने के बाद मैसेज आएगा। हाँ 65 में उसने बता दिया कि हेड्स अप, चीजें हो रही हैं। हाँ so now it's heading down. Even if you took 900, you made it in. So I didn't take any Nasdaq, only MES. 89 again, touched big.
One more time, trying to come and test S2. Let's see if it acts like a base or resistance. There you go, Wajid Bhai took, R2 took, beautiful. There you go, R2 they took. 3020 has big divergence on ES. It wants to climb S2. Danny, are you getting alerts? Yeah, no, Okay. I try to connect to the what Te- you call te- Telegram, Okay, but it says invalid. don't worry, we'll get you going. जब हम कहते हैं कि मिड बैंड में लेना जब एरिया से आ रहे हो तो ये वो जगह होगी एक सेकंड में देखता हूँ। नहीं अभी तो मिड बैंड एरिया तो नहीं आ रहा। अभी लोअर हाँ वो तो लोअर लो सब कुछ आप। मिड बैंड अगर इसका लेना हाँ तो इसमें तो कुछ नजर तो 5790 मिड बैंड दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं जब प्राइस एरिया से ना आ रही हो। नहीं एरिया का मतलब वो जब एक्चुअल एरिया के अंदर हो, वो जो रेंज होती है वहां से बाउंस हो तो जनरली बड़ी बाउंस हो जाती है। So now kind of thinking which way it wants to go. 3 times, Yeah. Still resistance showing. Yeah, now it's. There you go. There is a mid band. Bit of a divergence. These points you cannot trade in Yeah, these points. मैंने कल check किया था सिम में. You cannot check. No, it just when you're in the middle, Yeah. it kind of gets a little tricky. Yeah. अब देखें ये मिड बैंड बिल्कुल सही था और टेस्ट हुआ और नो प्रॉब्लम। Rafi, they send me this one. Yes. So give me a second. Did you send this to the WhatsApp? No, I should. You have to like as the step 1 says, take that ID
and your email and go to Telegram and send me. I will expedite it. SRE setup is on 1510. Now it will go down, right? Hmm? Now it will go No, down. no, there is no guarantee up or down. Because it tested as 2 ना as a No, no, risk. लेकिन वहां से 2 3 4 दफा टेस्ट कर सकती है वो अभी तो सिर्फ मिडल में बैठी है कि मैंने एक्सपेक्टेड लो की तरफ जाना है या दोबारा S2 बिल्कुल मिडल है we go with the trend पीछे बैकग्राउंड कलर के साथ 30-20 has a big divergence it means it should change the trend back up दो लाइनें जा रही हैं उसमें से तो वो आपको बता रही हैं कि यहाँ से मैं शायद निकल जाऊं वापस S2 की तरफ That is 57.85 and S1 की तरफ 57.97. Yes, correct. So अभी तो 30-20 पे 2 लाइन बता रही हैं कि जी. I'm not If that doing. is crossed, then it should go up. It all has to sit on top of S2. Okay. The moment it brings and sits on top of S2, that means we're good in terms of sitting as a support. It needs to sit on top of S2, maybe cross it, bounce it, cross it, bounce it. And if it thinks, yes, this is good enough support, then it will head towards your S2. Divergence pass हुई थोड़ा सा and then fell back up. Four, 6, 5, 7. This is the magic of market right now. Yeah. News, maybe. Is it news? No, 10 o'clock. Yeah. it's 10. Let's see. Yeah, sometimes you stay away from the market. No.
Daniel, just text me your email as well, so I can forward them. I have a two phone from, doesn't matter from which one. The registered one that is from Super Area, an email from Super Areas. Okay, they will send you a text now. Just follow the step number 3 now. I send it from my both phones. Okay. It says access denied. No, no. What? Give me a second. Did you do a start? Yeah, I did. Okay. Let's, It once. says this email is registered on a different account. Yes, yes. Three minutes news. This is medium impact. Sunil Batra, flag of Canada. $25 tax on iPhones. He wants to put 25% on iPhone. Yeah, yeah. Maybe I send it from two phones, that's why. Okay. Then you have two different IDs. Yeah, because it will allow you one ID, you know. And then have to start.
So 1 minute to the news. हाँ भाई नहीं लॉन्ग टाइम नो स्लीप यार ये बड़ा आधे खुद नहीं है सब चीज काम के अंदर किधर गया था अच्छा अच्छा कौन सा काम था Okay, let's see the news impact. So more new home sales. So it's a good news. Should, but it's medium impact. So, all right. Which Telegram ID for you is the following, Daniel? Trying to solve it for you. That ends with 4. Give me one second. That ends with 429. Which phone? 429. Yeah, an ID of Telegram that ends with 429. No, not that. When you chatted with them, you spoke and they gave you an ID. Okay. 2 phones? Yeah, that's what I said. Okay, so you sent me an ID, right? Yes, I sent it from both phones. But like the first time you took out an ID. Yeah, right here. So 429 is this. Okay. Let's try it again. Start. And it says, please enter your email address. Daniel Goli. Yeah. How's your restaurants? Restaurant is slow. Very slow. There you go. It says access granted. Sure, fine. No, just. I know. Go. This was a Goes. You're still aggressive. 89. I know. No, I see the number. I'm scared. Yeah. You're In not 5 days. incoming and outgoing too much difference. Yeah. Anyway, there you go. You are now part of the system. Yeah, thank you. How many days I have to? And you have to trade 8 days before. That's it. 6 days, okay. Last 2 days in and out $1 is all. Yeah, I do. These are ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ SAID ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ something joined it. Next second. Yeah. A lot of companies started. Let me come. Easier for me to come rather than for you guys. Oh, that's great. Yeah, look at this. Beautiful. You don't need even. No, exactly. You just look at the area. It tells you is it coming from or coming to. Yes. So we will. Any desk can do it again. No. So If you are on the highway, you don't need the computer. just don't crash. Just go over. Yeah. And pull over to do this. Please. If you crash your. I don't want to be. I don't want to be responsible. System and a car. Yes. So life more important. Life is first. All right. So testing S2 again. आप पहले ब्रेक करे और उसके बाद मुझे ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड तो अभी पीछे पीछे आएगा सर लेकिन 30-20 के ऊपर ब्लैक कैंडल खुलनी चाहिए टू द अपसाइड एक्सटेंशन में फिर मेरे है कि ये सपोर्ट बनेगी अभी तो ये पुश हो रही है ना
उसके, क्योंकि आपने देखना होता है कि ये सपोर्ट कब बनेगी। पहले तो एरिया तोड़े और उसके ऊपर बैठ जाए एज ए सपोर्ट, 2 3 4 दफा बाउंस करे, फिर हमें ये समझ आती है कि ये अब सपोर्ट बन रही है, अब यहां से इसने ऊपर जाना है। जिस तरह उन्होंने कहा है, वो एक और मार्केट को डाउ को देख रहे हैं, जो डाउ पे बैठ जाती है, सो डाउ फॉलो करती है। आज सारी मार्केट सिंक है, बिल्कुल 4 की 4 मुझे सेम तरह बिहेव कर रही हैं। अब ये अभी भी S2 को तोड़ नहीं पा रही, यस, और नैस्डैक दोनों। ये सब तो रेंज को टच करके फिर नीचे आई अभी है ना। जब ये क्रॉस कर जाएगी, इसको एज ए सपोर्ट बना लेगी, फिर मुझे चांसेस ज्यादा हैं इसके ऊपर जाने के। ओके ओके, एक्सेप्ट कर लें। रेजिस्टेंस कर रही है सर। हाँ, अभी तंग हो रहे हैं। We cannot take decision. No, go with green. If green, like if you're not doing area, okay, don't mix two different things. If you're gonna do area, wait for S1. Otherwise, you're gonna say, so don't go in and out of a trade based on. So the math is it has to break, sit on top, and then make it a base. Let's see. Then you can go long, right? हाँ, लेकिन हाँ, फिर मिड बैंड से लॉन्ग जाना है ना। फिर 15-10 के मिड बैंड से आप लॉन्ग की पोजीशंस ले सकते हैं। व्हाइट लाइन भी आ गया ना सर। हाँ जी, हाँ जी, कि ये वाला मिड बैंड स्लाइटली रिस्की हो सकता है। सिर्फ ये है कि आप अगर इस मिड बैंड पे बैठें तो ये शायद आपको नुकसान दे दें। तो इस वजह से आप जनरली डाइवर्जेंस वाले ट्रेड नहीं लेते। देखिए कलर चेंज हो गया, तो ये आपको अलर्ट एडवांस में है कि यहाँ पर ये वाला मिड बैंड रिस्की हो सकता है। ये सर जो आपने जैसे देखा कि ये मिड बैंड रिस्की हो सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन वो जो ऊपर वाइट लाइन है 15-10 के ऊपर एक वाइट लाइन बनी हुई है, या क्योंकि मेरी जो आप वीडियोस देख लें कि कौन से मिड बैंड ठीक रह सकते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप। सुपर एरियाज पे पढ़िए कि स्टॉप लॉस ऑप्टिमल कितना है। सामने जो वीडियोस होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है कि 8.5, फिर टूल बनाया हुआ है कि फॉरेन नंबर टाइप करें, वो 8.5 आपको निकाल देगा। अभी सर जैसे लोअर लो हो के इट गोस अप, नाउ वी आर टेस्टिंग के डिड इट ब्रेक द प्रीवियस हायर हाई। They won't। ये SRES की निशानी है कि यहाँ पर लोअर हाई बनना शुरू हो गया। तो लेट्स सी, अभी 30-20 पे ग्रीन है। अब इस पे भी रेड होके वापस ग्रीन आ गया ना 15। अब दोनों का ग्रीन, दोनों रेड हो गए तो आप सेलिंग में जाएंगे दोबारा। लेकिन रैपिड कोशिश करके ना ट्रेड डालें। 1 2 3 4 मिड बैंड्स ऊपर जा रहे थे, आपने 5वां जरूर लेना है।
मीनिंग कि थोड़ा सा रुक रुक के जाए वो, वरना आप, There are क्योंकि ये होगा 4 सही लगे, 5वें ने सारे प्रॉफिट वापस कर दिया, 4 सही लगे, इट्स ओके, जस्ट स्लो डाउन, सी ओके, अब अगले इसको बंद लेने दें, ज़्यादा लालची हो। क्योंकि जिस स्पीड से जाएंगे पैसे बनाते जाएंगे, वापस करते जाएंगे, फिर एंड में तो Relax. एक ट्रेड डाला है मैंने, सिर्फ S2 से सेल किया था बस माइक्रो, और मेरा भी एक ट्रेड है बस, बाकी अब वेट कर रहे हैं S1 पे जाएगी फिर सेल कर देंगे, या एक्सपेक्टेड लो पे आ जाएगी तो बाई कर लेंगे, ये प्लान है। 20 per either point. हाँ, Green से red हो वो गया। कोई बात नहीं, दैट्स नॉर्मल, इट जस्ट मींस ओवरबॉट, ओवरबॉट हो गया, डन। 10 minutes you will have a new account, एक सेकेंड, डन। अब ब्रेक करते हैं ना, जब सेल करेंगे। लेकिन 30-20 भी आने थे। अभी सर वेरी क्लोज टू S2 है, इट इज पॉसिबल कि अब S2 को टच करके इट कैन गो अप। यस, वही मैं बता रहा था कि पहले S2 ब्रेक हो, उसको बेस बने, S2 needs to break, so let's do it on the board to kind of explain a little bit differently, so you guys may have a better understanding on how these areas work. When you go to roof will become like your floor. Correct. Yeah, That's it. So that is true. S2, S3, or expected low. So today, because of Apple news, price shot up and it was opening somewhere here, right? So our system sent no alert, because it did send an alert that we are heading at 65. Everybody got an alert. We're heading to expected low. Night was what? Night low was 56. So our range was what? From 60 to 45. This was the range computer predicted. So price opened where? So when around 9:30, and then it didn't go to 60 to 45, but it shot up to S2. So when it's coming from the bottom, that's a resistance. Even though this is labeled as a support, you have to always see if it's resistance. So what are we waiting for? Personally, the next, Yes. even though it's a support, but today it will work as a resistance. Yes. So what are we waiting for? Price has to go up, make a few bounces, and then go like this. So this is how the price will work, and this is our S1. S1, I will short. Okay. So this is my short position. S2, I shorted. When I got in between 68 zone, I think what was a 5,800 or so, Yeah. S2, I did a short. So today, these zones are becoming as short zones because not a long, meaning that we're not buying from there. If the price always, generally, the price is here, you have R1, S1. S1. If it goes here, you normally buy. If it goes here, you normally sell. So But today is completely opposite. Sometime you will open the computer, price is opening at expected high. Because night, I think Trump said something good. Today, Trump said two stupid things. One, tariffs on European Union. I'm being recorded, and next thing you know, my account is blocked. So, yes, he did a smart thing. So next thing he did was, because of that, Apple tariffs came in and Apple lost value in the stock, and the stock price came down crashing, right? So when it crashed, it ended up here, expected low. And now, where do you buy? You buy with the green, or you sell with the red, no problem. But you have been all taught in Daniel's lecture, you generally, from expected low, you start buying things, right? So if you bought it here, you exit here, or you sold here. And then now all I'm waiting for it to cross S2, make it a base, 1 time, 2 time, 3 time, and then I will then do a short from S1. तो सर जैसे अब S2 को we are testing. Uh-huh. अब let us say if it goes little down on S2 and then little go, Yes, that's okay. That's fine. That's fine. As long as within the range, I have a more that it's not breaking this anymore. Then I will say, all right, good support for S2. The support has to be
tested a couple of times that I believe it's being testing right now. It is testing right now. Yes, yes. It is testing. Where are we? Look, it's above now. Yes. See, it will test 1 time, 2 time, 3 time. If it's not breaking, long towards S1 or short from S1. So you can go long towards S1 or short from S1. I think there you go. We have a black candle that's appearing above to the upside, hopefully. This has made it as a support. But Nasdaq came close to S1, very close to S1. Background is red, no? No, background is still green now. Green. So we should buy here, right, sir? सर अगर आपने मिड बैंड लेने हैं तो बाय करेंगे आप Sir, today was low to go high? Oh, yeah. low to high था Mine is red. no where no It should be green. I did. oh sorry 1510 is okay but 3020 is good Oh, sorry, sorry. yeah 1510 just momentarily changed. Did we get an alert on नास्डैक में अलर्ट आया जी alert आया था Nasdaq में आ गया था कि हम S1 की तरफ जा रहे हैं yes approaching S1 there you go that is thing it's okay लिंक होता है 100%. Wherever Nasdaq bounces from, ES will start like 90% of the time it will follow. ये भी S1 से कहाँ से आ गई नंबर क्या आया नंबर नहीं दिया नहीं नंबर नहीं देगा वो करंट दिया और आपको रेंज दे दिया कि 21,000 से 21,030 तक आपको सेल करना है नया आया सर इससे शायद नीचे है। आया है Where sir this alert comes in? टेलीग्राम आपको 93 से वापस आई है। आपको Nasdaq का अलर्ट गया है तो आप देख ES रहे हैं Nasdaq में कैसे हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ ये अलर्ट ES का नहीं गया इसका नहीं हाँ Nasdaq का मैं पढ़ रहा हूँ This is rock solid. I'm happy the developers did a good job. अग्रेसिव जाने के लिए मुश्किल है लेकिन जो भी नहीं लोग बैठे होते हैं तैयार वो एरियाज आते हैं अब उसको मैं और ट्वीक कर दूंगा so these alerts will help you with ES and Nasdaq to kind of on the road so how high did it go 21,950 which ये तो current price है हाई कितनी असल में इस सिर्फ इस कंप्यूटर पे स्टैंप आ जाती है करंट Nasdaq गई थी 993 तक so don't take 21,000 now ऊपर का ले लीजिएगा क्योंकि सेल वहां से बनता है ना आपका S1 के अपर से क्योंकि ऑलमोस्ट 8 पॉइंट से वापस आ गई चलो इट्स ओके या रेंज भी दिया था ऊपर दिया था I don't know if anybody $21,000 सारे सेटअप बन रहे हैं सर कहाँ पर ओके चला भी गया है SRES बना 1510 में now it's testing the bottom range as a let's see if it makes S2 as a base because both are heading inside ES is inside S2 and Nasdaq is now heading towards S2 की देखते हैं बेस बनाती है कि नहीं
There you go. We are on Nasdaq. We are on top of the S2 right now. 930. Let's see if it makes a base. Until 900. S&P 500 sir, it breaks the previous higher low. हाँ जी, वो एरिया को टेस्ट कर रही है. सिर्फ मैं देख मॉनिटर कर रहा हूँ Nasdaq को. If Nasdaq makes 930 as a base or 900 as a base, it's shooting up. We just have to figure out if 930 is base or not as a support. The 922, 23, 25, it's hovering in there. All right, next candle, it's 915, 917. It's time to wait, right, sir? सर बेस बन गई, बेस बन गई. So should we buy now? नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये Nasdaq वालों के लिए बोल रहा हूँ. Oh, नहीं, मैं Nasdaq बेस बन गई. Has been या हमें चाहिए ग्रीन अबव और S2. हाँ. आपने तो अभी मिड बैंड से सेल करना था, 2 पॉइंट आपके आ गए. वो देखें मिड बैंड पे प्राइस आई, हाँ. 2 पॉइंट लिए तो इट्स डन. Got it. So there you go. 2 micro. He entered at 916, out, took 20 points. Great. Excellent. I took points too. I actually went in from 930. Done. Excellent. ठीक है सर. अब उसी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जिस तरह चीजें चल रही हैं. कोई ऊपर से गिर रही है, अगर बेस बन गई तो it's gonna shoot up. So 930, 915. So I was waiting from 900. If you do Nasdaq, you gotta watch these levels very carefully. Where the level is, where it's coming from, where it's going, and what the possibility could be. So if you entered 930, you're done. You entered 915, you're done. If you waited for 900, you didn't make any money, right? So I took my risk from 930 and I got out by 20 points and I'm done my target on my second trade. So now most probably ES will break the. ES will set, हाँ जी. अब वहां पर वो अगर बैठ गई उसके ऊपर जाके, then green mid bands you will go up, and that's your chances to tell you if this is going to be a longer swing towards the mid band. आप कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता कि ये mid band 2 पॉइंट देगा या 15 पॉइंट देगा. आप एरिया से जज कर सकते हैं कि उसने कैंडल ऊपर खोली है तो और लॉन्ग जा रहा है तो लंबा जाएगा, टुवर्ड्स एरिया जा रहा है ना. और अगर आपको फौरन पता लग जाता है कि मैं नीचे की तरफ मिड बैंड है, कैंडल ने खोला है तो मैंने लॉन्ग नीचे जाना है. एरियाज हमें बहुत गाइडेंस देते हैं कि मैं मिड बैंड में भी कितना ट्रेड लूं. ठीक है, स्कैल्पिंग समय लिख दो. अगर आप एरियाज को कंबाइन, सॉरी डैनियल, आई विल एक्सप्लेन, आई रियली सॉरी, एरियाज को लेके उसके कंबाइन कर देना
So So let me. I have to learn You new have to language. learn the language, man. My 94% of the students. When I sit down and see it changes immediately. Yeah, it's like a channel switching. I understand many I wish I some had. of the words. I wish I had I a got it. subtitle because I'm talking area support midband. So what I was saying is, sometimes you're guessing, is this midband going to go shoot up or shoot down? Right? Should I take this 1510 midband or not? If you have, like in our case, it's a good thing. It's happening live, so I can explain. Right? It's a opening up of the area right now. Yes. You want to go from S2 to S1, right? So those mid bands, if the price is up, has the more probability, not 100%, that you take that mid band and it's shooting up, right? So On the Nasdaq. oh, no. Yes, Nasdaq, I'm not taking mid bands. I'm just looking at support It's just and the area. just the area. So look what happened. The price went from expected low Yeah. to S2. Okay, good. It crossed S2, went to S1. We missed it by 8 points. We didn't take it. But when it shot down, I wanted to see if S1 is a good support. So it landed on 930. I entered, right, as a buy. Yeah, you take a chance. So it went against me 15 points. And I said, I have, because I'm doing 2 or 3 micros or maximum, it's not going to go crazy. So at 900, so 930, it just shot up to what? 972, man. It is crazy. So That gives you a clear picture, like how many profit points you can yes. target to, right? अब देखें ये मिड बैंड आया है, ये एरिया के ऊपर आया, देखें इसको अभी भी इसने अभी इसको सपोर्ट बनानी शुरू कर दी है आहिस्ता आहिस्ता. तो अभी 30-20 का मिड बॉटम ऑफ द बार टेस्ट हो रहा है. So if this candle of mid band is above, you more chances are it will shoot up. More chances, not 100%, but right now it's testing as a support for your ES. It is sitting at a mid band right now. And that's out of that Ye- area. yes, it's out of the area, so it's above the area, making it a support. Look, you got your 2 points. Already you're done your 2 points. So now more chances this midband should start to go up because it's above the area, but we'll see. But 2 points from this midband are done. So I'm happy things are happening fast enough so I can explain what's happening. Sometimes you sit and it's hard. सर आपके हैं रेड to buy, red to sell, green to buy, और रोज का 100 का टारगेट. एरिया ट्रेड्स थोड़ा एडवांस हो जाते हैं शुरू के अंदर, इसीलिए आपके वो 4 लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं होते और आपको तो हम डिस्प्ले भी नहीं करते क्योंकि आप एरिया में आप कलर के अगेंस्ट जाते हो. आप कहोगे यार कलर ग्रीन है, इन लोगों ने सेल कैसे डाल दिया, राइट? सो see 30-20 is now taking an SRES setup. It is starting to say I'm not going, I made a higher low. So that hopefully will act like a good support in this zone. All price is doing is testing if S2 is my good support or not. And that's all we really care about it right now. Kind of slow down. Again, testing as a support. Let's see. Sir, the SRE. नहीं सर, मैं तो 2 ट्रेड है, मेरा टारगेट डन हो गया. अब मैं बिजली में तार दूंगा तो वहां पर करंट लगेगा मुझे, तो वेट आराम से बैठूंगा S1 के ऊपर 30 का नंबर वहां तक गई फिर, क्योंकि वो पहले बहुत करीब से है ना. तक जा रहा है.
Rafi, when Daniel is speaking daytime, Yes. morning, his voice is really bad. Okay, I upgraded to last 3-4 days a new system. No, No. yesterday I listened. It was a Try for all of you guys have access to GoToMeeting. Do it through that, not through my bridge, right? So I take the business class, I bridge it to economy class. that's Right? right. So sometimes the bridge is shaking. So you have paid for business class, Yeah. enjoy it, right? So they bring the drinks at the Emirates and this. So you get because you spend $7,000, so you have a little bit. That's the only difference, by the way. The audio quality, everything else is the same. By the way, don't forget about the Take profit. the- Yes, I will today. No problem. Apex भी इन्हें ही no Apex का renewal within 90% से वो compare होता है first month में 90% actually it will kick over the new season Jimmy will make sure that we are new buying them over the renewal On the Apex, we have a minimum for 6 days. We have a minimum of $150. 50. Just 50. That's 50, man. Please. No, on the first 6 days, 50. $50. Correct. But when you reach the goal and on the Yes. 6 days, you can do one Yes. Yeah. Scalping. I mean, flipping. Philippine. Okay. So तो प्राइस ऊपर से आके इस मिडबैंड को टच करती है ये वाले को is that the point or the middle like when it's coming from top अगर यहाँ से प्राइस आ रही है तो कौन सा ये point हायर हाई से हाँ तो मुझे कहाँ से ऐसे दिखता है कि अच्छा यहाँ पर मिडबैंड को टच किया ये वाला ये जो लाइन जा रही है ये मिड बैंड है यस यस ये नहीं बिल्कुल करंट प्राइस का मिड बैंड Again, 9:30 area worked and it's testing. So the rush is gone. The adrenaline rush is gone. So now we wait for. If you missed it, you missed it. Now you wait until the next bus or for the area. Maybe S1 top, maybe R1, but the But Rafi, if, to be honest with you, I had so many problems with Apex, as you know. But honestly, if we control ourselves, we can do by 6 or 7 trade. Daniel Maximum. says I go 10. Daniel says 4. Yeah, I said 4? 6 or 7. I Yes. took the middle. With the 6 or 7, you can reach the $100 a maximum. day. No problem. Okay. And do they have a split when you have a large account? No. First, they don't have a split for a long time. That's the most difficult company to work with. that is 10 you pointed at John Then what is the procedure of the payout in the large account? Nothing. They just pay you like wise. No difference, man. They don't take it off. No. When you have a 20 account, Right now, you will lose. You will leave Apex after hearing this.
you will leave it. Trust me, Really? what I'm about to explain to you, Okay. because Apex was great, but when you joined, that was the only company we kind of had available. Yeah. Right? So you took your payouts, everything is fine. But now there are two companies that are leading and everybody's trying to get the market share, right? One of them is a legend. One of them is a payout. No, not Legends. Take Profit and Perdia. Oh, These Perdia. are the top two companies. Now, let me give my disclaimer first. Yes. But Disclaimer is this: when these companies run away, I'm not responsible because I promoted fast track trading. Yeah. Got a payout. They just ran. you Right? So, remember that? do you mind moving? This projector is gonna bother you. Yes. You wanna either go there or here because that always this person Yes. Get can't see Yes. me. So they're trying to go around the projector. actually. Hopefully, one of these days we'll mount it from the top. So, It's much better. Turn off the light one. yeah, if you can grab one light off, so maybe it'll help some. So the company that I'm about to explain, I will explain you for both because my apologies, I switch tracks very easily. It's, Because 90% is Punjabi speaking. Yeah. Then I'm like, I lose my whole thing. So first I will explain you take profit. Okay. Okay. This company has been around for a long time. However, they had something called daily loss limit. They're as old as Apex, but because of daily loss limit, I don't like it. What does that mean? You buy an account 1,500, but you lose 500, account is blown. Apex, you can drain the whole account, right? yes. This had so about 3, 4, 5 months ago, they removed that limit. So we started to promote it again. Okay. I like their $50,000 account. Even you can do 25,000, 50,000, same thing. So right now they have a promotion. Again, my disclaimer, listening online, companies, they disappear. We're not responsible. So I will put in the $50,000 account. So this is what happens. They give you $2,000. Your target is $3,000. And you cannot lose the 2,000, right? Of course, stage 1, and then you have stage 2. So like an Apex, Same as Apex. same as it. Now they allow you max 5 accounts. They don't, unlike Apex, they don't allow you 20. 20. So 5 accounts. जी, ठीक है. Number 2, stage 1. So your target on stage 1 is 3,000, and your max loss is 2,000. So that's your. In one day. That's I will explain. They don't have a 1-day pass. They don't have. Okay. Right now they have a great promotion. This account is $115. $115. Sorry. If you pass it within a month, they don't charge you a PFE. That's really good because guys like you can go in and out quickly, and it's trade away. And do you have Flowbot or Apex Copier? A copier, Apex copier. I'm gonna ask you to invest into Flowbot. $120, where you're spending so much. It's slightly better copier. Okay. Apex kind of copier kind of Yeah, crashes, yes, yes. glitches. Glitch. Flowbot, most people with 5 accounts, no issues. So we'll buy that later. $115. So today is what? May 23rd, June 22nd. If you finish within your target within a month, no PFE. They automatically so you're only paying 115 or 105. Okay. So you have minimum 5 days. Oh, okay. Okay. And number 2, in 1 day, you cannot make more than $1,500. Oh, okay. So fastest you can complete this in 2 days. You made 1,500. So your loss is 2,000. Your target is 3,000. So that's how the company has structured itself. That's it. These are the rules. Okay. And you can trade news, you can do average, doesn't matter. Just like Apex, you can do everything. Okay. But not 1 day pass, 5 day pass. Okay.
Same idea, you make 1,000, this doesn't change. Today you made $100, they don't give you any more threshold. If you lose 200, 200 goes away. But if you make $300, they'll give you that $200 back. Now, if you make $200, for example, 2,200, Yes. and you get back to your same position, Yeah, that's fine. it's going to take it off from threshold? Yes, in the second account, Okay. not in the first stage. Okay. So first stage is slightly easier. Okay. So maximum 5 accounts, target is 3,000, your loss is 2,000, Mhm. minimum 5 days and 1,500. Okay. Once you pass this in 30 days or 5 days, you get qualified for round 2. This is where it gets the best in the market. So round 2 is same, like Apex. So you start 50,000, you are given 52,000. Your target now is 2,000, Oh, not not 3,000. 3,000. So now it's slightly easier. So here in the, this is called the pro stage. So your target is 2,000. Max loss is 2,000. I'm not going to explain live threshold. You already Yeah. know it. You see 200, you close 0, they deduct 200, right? Yes, Here's the best part. Here, remember, you haven't paid a fee. yes. So pro is $0. So only 0. You can do this and there's no time limit. Oh, it is You can like do that. it in 1 day. Oh, 1 day. 1 day PA. Okay, okay. So let's say infinite time. And the best part about this, daily payout. You made $5,000 in the evening, request $5,000. Oh. They don't care about making 8 days, minimum 15. No, no. As long as you say you have that threshold, Yes. you can continue. So the moment you reach 52,000, anything above, you can withdraw in the evening. Oh, In nice. the evening, same day. 53, you can take it out. 1,000. So if you take 53,000 in the evening, go request, take 1,000. That's So now I have people, like he just texted me, 4 accounts, $100, $400 done. How many can we buy? 5. We can buy together 5? You can buy together one buy, लेकिन पांचों को पास भी करना है फिर आगे जाना है कॉपियर में लगा के पास कर ले So 150 is 1. एक दफा 5 so आपकी इन्वेस्टमेंट 115 टाइम्स 5 रहेगी आपने 2 लेने हैं 3 लेने हैं 4 या 5 This price is much cheaper than the Apex too. Because Apex you pay 30 something dollars plus $130. It's going to be So 150. this is right now, but sometimes, it looks easy on the board. You understand the struggles of Yeah, yeah. making $1,000, right? The market can slip in 2,000 high. Gone. बैठे चलते हैं। आपका टेलीग्राम टेस्ट करते हैं पहले। अब Are we copier maybe same thing like first one pass and the second Yes. one? No, no, by the if- second one you have to pass the 1500. Yeah, but some people buy a copier for $120 Oh, and then they link 5 accounts together. So if you pass one, all fine. 5, but if you fail one, you all 5 fail. So be careful. Copier doesn't mean it's just if you make a wrong move, it will copy that wrong move 5 times. So let's say you long to expected low and the price falls more. Now 5 times you're falling. The idea is when you are in the pro account, work less. Yeah. Yeah. Instead of making $500, you make $100. in a- Five accounts. What is that? Minus 200. I think. देखिए एक ट्रेड लिया $100 का आपने प्रॉफिट लिया Upper plus हो गया. ये तो प्लस हो गया आपका टारगेट नीचे आ गया उन्होंने आपको $0 दिए कि आपका 2000 भरा हुआ था वो 2000 से ज्यादा नहीं देते इस स्टेज में अच्छा आपने 200 लूज किए 200 लूज हो गए आपके 1800 रह गए अच्छा हुआ. तीसरे दिन आपने 300 बनाए आपके पास 1800 थे उन्होंने फिर टॉप अप कर दिया 2000 तक 300 बनाए थे दिए आपको 200 हो गया. क्योंकि वो 2000 से ज्यादा नहीं देते आपको इस स्टेज में लूज करने के लिए हो क्या रहा है ये टारगेट कम हो रहा है ना तो इसीलिए मैं If you are not losing, then it's fine. यस दैट्स फाइन टारगेट तो कम हो ही रहा है तो यहाँ पर लॉस यहाँ अब आपका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर बनाया 100 यहाँ बनाया 100 और क्योंकि 200 तो लूज हो चुका था
तो अब आपके पास सिर्फ पीछे रह गया 2700 का टारगेट। तो आपका टारगेट और आपका लॉस 7, इसीलिए मैं ट्रेड ऑफ इट खोल के बताता हूँ। वो नंबर देख लिया करें कि मेरा नंबर क्या है, मेरा ड्रॉ डाउन क्या है। So just like trade of it, you open, you Yeah. look at your profit, you look at, so this is not an amount of money in your account. Yeah. This is this. Yes, So it's always there. तो फिर ये शो क्यों करते 50,000? सर ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां पर 10 मिलियन लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? तो क्यों वाई? सर उसकी रीजन ये होती है, जो नंबर ऑफ लॉट्स होते हैं ना, वो उनकी सीएमए की एक लीगल रीजन है। 25,000 पे आपको 4 देते हैं, 50,000 पे 7 देते हैं, एक तो वो एक स्टार्टिंग नंबर होता है और एंडिंग नंबर होता है। 50,000 पे 1 लाख तो नहीं करना चाहिए, 3,000 ही बनाना है, सिर्फ वो एक बेस नंबर देते हैं आपको। तो हमेशा हर बंदा ना इसको लेके बैठ जाता है, मेरे पास तो सर कौन $115 में 50,000 देगा यार, पहले तो कॉमन है। शो कर सकते वो दे रहे हो चले शो करें। नहीं वो आप लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बाय कर सकते एक्सचेंज। वो देखिए 50,000 पे ना, आप अगर रियल 50,000 का अकाउंट खोलेंगे ना, तो आपके 7 अलाउट होंगे, 5 अलाउट। तो 25,000 का अकाउंट खोलेंगे ना, तो आपको 4 मिनी डालता है। तो जब 50,000 है तो आप 7 डाल दें। जब 1 लाख का अकाउंट है 15, जब एपेक्स देता है ना 3 लाख का अकाउंट, आप 35 लॉट डाल सकते हैं। तो अगर वो नंबर ना दे राइट नंबर, तो एक्सचेंज उनको ऑर्डर नहीं डालने देता। तो इसका इसलिए मेरे लिए ये नंबर इररेलेवेंट होता है। मैं सिर्फ ये देख रहा होता हूँ भाईजान टारगेट क्या है और मेरे पास मैक्स लॉस कितना है। So Daniel, this is what you have. Yes. Kind of do. Right. Let me just keep an eye on my WhatsApp too in case questions come in. If they don't have the threshold, Yeah, that would be a win-win for everything. Yes. So, but they have a live trailing, not here, but there. yeah. So here's what I did with quite a few guys. They took their balance to 293. So basically 52,293. I said make out 293 Yeah. in the evening. Yeah. I have guys who make, yesterday one guy made $3,000 one account In one day. in one day Thank times 5, and then he got $15,000 in the evening. They are crazy. I don't know how long they will last in the market, but this is too Yeah, crazy. I don't think so. They continue. But it's okay. That's why I don't leave any money. Yesterday I withdrew 2,000. I said, hey, Yeah, I'm taking my money. I'm not leaving it there. They work with the wise too. Why is instant? 37 minutes money hits from their website to your account fast. Okay. But you have to request it at 12 o'clock in the morning, because they do the calculations for the next day. So overnight, so let's say you closed your trade at 6 o'clock, 5 o'clock, midnight, your trade is going to get executed, and then you go in, request, by morning, you have money in your account. Before I go, can I register to? Yeah, I will set it up, your copier, everything, no problem. So this is take profit. Yeah. You can take 25,000, it's 105, target is half. It's up to you. Do one. Yes, I'm going to. See exactly. just one, how you get the feel of it, and you will recover all your Apex, and then you're gonna say, man, Apex is the most difficult company right now. You cannot do this, you cannot go in a loss, copier has This is it. take profit. This is called take profit. So this is the company I wanted to explain to you. So you will do that. So you don't change any of trading behavior, but what it is in one day you get lucky, price comes to expected low, you went long, and you made $2,000. Just take it out in the evening. Yes, exactly. Just save it. This is much better, I think, safer. That's as close to a real account. Right? So now I will quickly explain. And good things, you don't need to make it 3,000. You just make it 2,000. 2,000 in That's the perfect. and one day. Yeah. You don't have to wait 8 days, Apex 9 doesn't let days. you to do that. Oh. So one quick company called Perdia, so I can explain. So Rafi sir, before we just Haji. one last question. Haji. So the main difference between 25,000 and 50,000 account is the loss threshold, right? Yes. So the $50,000 account of 115, you have $2,000 ability to lose. In a $25,000 account, you have 1,500. But then round 2, your target is 1-to-1, meaning round 2 you have to make 1,500. So round 2 is kind of same. Same. So it just gives you slightly more money to lose. If you're doing an average, you're playing with 5 micros, these should be not a problem for anybody to pass. So
This is how you do your thing. Let me ask if there's a question for take profit. The only thing is here, if you lose the EA account. You're losing more. hundreds You're of like, so this is a steep hill for, Yes. but that is the reason for new users, I don't recommend it. Yeah, that's. Because they gotta go through the grind of Legends or Bullnox and Apex, and then because what happens is if you take Bullnox and you fail 10 times, Yeah, that's. no, it's okay. No, Bullnox, it's $15. No. $15 they have running a sale for this account size. $15. And I bought. You should buy some of those too. They have good rules. I'm almost on my fourth payout. Okay, can you explain to me that one? So Bullnox is like an old Apex. Okay, That's it. okay. 10 days of trading. No nonsense of so just How many like days it. pass? Just One day pass. Okay, that's Yeah, but they only allow 3 accounts. uh, So it's okay. better than that. It's like an old Apex. So you take your EA, you finish your EA, group EA, and that's how you do it. Bullnox, what I was saying is new users. Let's assume you're having struggle with trading, and you failed 20 accounts. I'm gonna say 20 accounts. It's okay. People fail. Go up, go down, go up. 15 times 20 is $300. You have, and you know how much money you have lost? 2,500 times 20. Like ये हर दफा 2500 यूज लॉस हो रहा है ना, तो कितना बनता है? You have lost $50,000 at a cost of what? $300. Yeah. And this is incredible. So you can experiment mid-band, all of these experiments, and then you are like, all right, this account is only. What I like about Bullnox is renewal is same price, $15. So if you don't complete your target, renewal is just $15. It's not like how Apex says 30, double, triple, right? So Apex या कोई भी ट्रेड प्रॉफिट अगर रीसेट होता है तो reset तो हम करते ही किसी को नहीं, cancel करें नया ले लें. If you do reset, it's a $50. Yes, there's no point of doing a reset whatsoever. लेकिन Apex वाले बोलते हैं रीसेट भी 14.99 $100 का रीसेट किसमें? टेक प्रॉफिट में, yes, लेकिन एपेक्स की बात हो रही है, इसमें reset $100 का. Here's the problem with reset, guys. Everybody says, I reset, I'm ready. Let's say you traded 10 days, for example, and you lost money and you lost the account. You go reset, you don't get $20, 20 days. You only have 20 days left. You have to now go rush. They give you the money, but they don't give you the time. So reset is good for bigger accounts, 300,000, 150,000, not because let's say you were into the trading and you spend 15 days and you blew the account and you click reset. Why? I say your account is 115 for $15, at least you get the full time from day one. If you click reset, Legends, Bullnox, Apex, take profit, you don't gain the time. The money the time you have. Let's say you already made 1,400. Zero हो जाता है. 1,500. But you already made वो zero. आपने dead लेकिन अगर हम सेट कर लेते हैं तो that 1,400 will not go forward to the. नहीं जाता, reset हो जाता है वो सब नहीं जाता सर. Whether you do a reset after a week or two. Yeah, so it starts from आपकी expiry नहीं change होती. So here, let's do this. May 23rd, let's write it this way. May 23rd to June 22nd, Daniel today has 30 days to finish this. He starts this account. He keeps building up 23, 24, 25, 26, 29, or even June 2nd. He managed to make $1,800, and then he messed up. He account blown. He was almost to the target of 3,000. He made $1,800, but then he lost the account. So look how many days he spent making this. There's 20 days left. So you have 20 days left and you have 10 days. You decide, I want to do a reset right now. Account will go back to zero for $100, but your time doesn't change. Now you still have 20 days to finish that. Then you have to be rushed. Now you're rushing. Why not just cancel the account and go back and start your day one here?
It's not technically. If the amount will not. नहीं जाती ना, amount नहीं जाती, नहीं लेकिन जाती तो फिर तो बेकार है reset करना। लोग कौन रीसेट लेते हैं? मैं कई दफा रीसेट लेता हूँ 3 लाख वाला अकाउंट, जो बड़े अकाउंट्स होते That's हैं। different. नहीं, वो इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसकी प्राइस इतनी सस्ती हुई होती है कि रीसेट $50 डाला, क्योंकि लेट्स से नया अकाउंट 200 का मिलेगा, रीसेट 50 का है, वहीं से शुरू कर देते हैं। टाइम आगे एक्सटेंड ना मिले, इट्स ओके। तो रीसेट की छोटे अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। रीसेट क्या करता है? Then why people reset the account? बड़े अकाउंट करते हैं। मैं बड़ा अकाउंट करता हूँ। एपेक्स लेजेंड ने एपेक्स put an account out there for 300,000 for $35. That was some time. What about PA? PA नहीं होता रीसेट, वो फिर आप लाइन में दोबारा लगते हैं। अच्छा। So you did, so I blew the account. 12,000 into it, I blew the account. It's better for me to just pay $40 to reset rather than paying $200 to buy a new account. Here, reset is more expensive. So legend में कितने लेते हैं? $450. हाँ हाँ, तो टेक प्रॉफिट भी 500 लेता हूँ। अच्छा, 500 ही देना है, पर्डिया में आ जाए। 500 क्यों देना है यार? मैं तो कभी किसी को reset ना दूँ। I am against resets because reset is only good if you have a bigger account. Which brings me to this company, allows you to just one account, doesn't give you more than one account. Wow. But very professional. They don't have life threshold. So that is the best thing. You saw 200, you closed 0, you got 0. There's no headache why I lost money in the threshold. Yeah, stress. So the account that I recommend is their $100,000 account. That's the only company? That's the only company that allows you No threshold. no live threshold. Still, you have threshold. So they start with this. Account is 750. You see how it gets expensive now? This is not a cheap account. Wow. Apex, Bullnox, $15. Legends, $50. Apex, $33. Take profit, $115. Perdia is the premium of all. They charge $750. You must be a professional. Until you are ready, because you know why I put Perdia? Look, Daniel, you join, I ask you to do demo, right? Yeah. And people have money. Let's say you have $5,000 of own money in GFF. Okay. Some people say, I want to go from here to here. The moment you go here, you will blow this money. You have no idea how futures trading works, how night session, low. आपने डेमो किया, 5,000 डाले, किया, लैपटॉप भी बंद कर देंगे, कंप्यूटर भी बंद कर देंगे, ये भी छोड़ जाएंगे और गालियां लग देंगे. That's why I never say you don't know how to trade, never put your own money. So what I ask you to do is step 1, let's give you some experience on legends. If you are okay from legends, go into take profit. Because you have to, trading is not 1-day job, 2-day job, 3-day. It's lifetime. It's a journey, lifetime. So you go into take profit. If you are good at take profit, then you go to Perdia. And then if you are good with Perdia, because how you will manage 5,000 of your own money, this will tell you. If you can't pass legends, it means you're not doing so well. Take profit. So some people move into your one. So why do I like Perdia? For $750, there's no challenges. So if you have $3,000, you go to GFF, you give them $3,000, you get $3,000. Plus, they will charge you $115 per month. They will charge you whether you trade or not. There's a fee. So this one doesn't have an EOPA. नहीं कुछ नहीं है. Straight, no EA, no PA. This is real account. So you spent $750 and you got $3,000. Okay. So you really, your value, like he other day wired $2,500 to GFF. He wired $2,500. They received $2,500 minus some wire charges. Now he's paying $115 per month, whether trade or not. That should be a couple of micros. You can make that, but your value of the money is the same. You say, okay, I know how to do trading, but I'm not ready to risk my own money. That's $750. Put $750, you get an account of real $3,000. Real. Oh. It's not a fake account. It's not a dummy account. So whatever we make after It's 3,000. yours. You make up to $3,000, they will give it to you.
real account. Because they already They first given. to pay. They- Yes. They already No, give no, us no. 3,000. There's That's some the condition. question. Wait, let me give you the conditions first. So they ask you, all right, we will like to invest in you. You give us 750. We will put 2,300, 2,350 into it. Like 22 कितने 2250. 2250. आपके तो 3,000 मिले. उन्होंने 750 you contributed, they contributed the rest. Yeah. And they opened an account, real account. Okay. No expiry account, good for 10 years, good for 100 years. There's no monthly fee. So you're like, all right, I am ready. This is as good as it gets. Same as your money. Same as your money, plus you're not paying $115 per month, right? However, to pay you, they ask you for two things, just two things. Your account size again starts with this number, 100,000. But They will give actually, you- it's 3,000. Forget Yeah, 100,000. no, but you have a target. They will pay you when you turn 100,000 into 103,000. So that's how they will pay you. They want to see you if this person is good enough. So condition one, target 3,000. Condition number two, max loss 3,000. Because they're giving you 1-to-1 ratio. Make 3,000, but don't lose 3,000. Okay. Okay, good. You imagine if you lost 3,000, you really lost 750. Yeah. Remember, And there is no life threshold. there's no life threshold. So this company gives you one account. My question is, Same when day we get payout, sir? मैं आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ. Same day payout? नहीं, Like- मैं उधर आ रहा हूँ. Okay. You can open the second account under your spouse if Yeah. you like. They only allow you one account, but They they don't care allow, about the address. they don't care about the address yet. So if you want to go multiple accounts, that's a loophole. So 2 accounts, you can get 6 grand. Okay. So you finish this. So number one, when they will pay you. First condition, turn 100,000 into 1.3. Do not lose 3,000. It's okay. Number 3, at least trade for 10 days. Let me make a box here. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. They don't let you withdraw anything before 10 days. So you're 10 working days. 10 trading days. So whether it's positive or negative, that counts, by the way. If you lost $10, it's still a trading day. One day. One day. So you go in, हाजिरी लगाई, आपका trading day count हो गया. Fourth and final condition here, there should be 5 days where you make at least $200. So that is the most difficult condition they have. So let's start writing. So Daniel goes ahead today, opens up this account, pays 750. He has it live, it's ready. Now today, give me a number on day number 1. What did you do? 300. You made $300. Okay. One box. $300 you made. They didn't give you any more money because you have full $3,000. Your one box is done, Yeah. and your $200 one box is done. You lost 250. You lost 250. Day number 2, you lost 250. Your trading day is done, but you don't have a profitable day. So 4 days are still left. You came in, you made $2,000. $2,000. Whatever you were doing, sometime I've seen you go with lots. Crazy, man. The guy goes in with so many lots. $2,000 you made. They won't give you 2,000, but your target is went down. How much you were down? 250. So 1,750. They just gave you 250 back because that was missing in your threshold. Because you made 2,000, but look, your trading they got counted. You made more than $200. But look how small your target is left. 3,000 minus 2,000, 1,000, और यहाँ पर आपको $50 all मिल गए. So this is how your target and your thing works. So the moment you complete 5 trading days above 200, you pass. And the total is 10 trading days. So that is your Perdia.
And now what will happen? You say, I worked all of this. I want to get my money because it's no exam, right? So Kuldeep ji over there finished and they sent them an email. What would you like to do? You can withdraw the full 3,000. They will give it to you. Your account is starting from zero. Yeah, your account. Or I just ask them, take half. 750 लगाए थे 1500 ले लो 1500 का अकाउंट चलाते रहो फ्री का पैसा है 750 का डबल आपने वैसे ही कर लिए ठीक है ना बल्कि हमने तो उसको सेल पे लिया था थोड़ा If you take it $3,000, your account is gone you got to start again right so you can't start over and over you can't just go in with 750 keep taking 3,000 but if you decide to leave this 3,000 you can get daily payout so let's say your account goes into the live account. They put it in a live account. You made 5,000, take out 5,000. Split is 90-10, I believe, or 80-20, I have to check. So that's how their Perdia account works. You still have to do a bit of a struggle, but not like EAs, PAs. So that's why I have a full pathway. Do your demo, do your legends, then go into take profit Perdia. Most people, honestly, between these two, they never have to put in their own money. They said, hey, this is free. Till now, it's a Perdia it's a take profit is good. And 2 years ago, we didn't have an option. We were only struggling with Apex and Apex copiers. So many companies are coming. Now, for the dollar value, I think take that's profit is the best. But still, you got to do 2 struggles. That's no So the problem. fastest you can finish take profit is 6 days. 5 days for EA, 1 day for PA. That's the fastest. You can't go any faster than this. And the fastest you can finish a Perdia is 10 days. So If you lose 3,000 from Perdia, तो आपके then 750 गए आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गया आपने 750 लेकिन अगर आपने लूज नहीं किया हाँ। तो there is no renewal fees. नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं Let's say you can have it for lifetime. Right? lifetime no problem it's okay I use it for data no problem Thanks. no problem On Apex too, if you don't touch your money, But here's the thing. Now Apex have a new rule. The dead account, 3 months you're not putting a trade, they're removing the account. The PAs, you gotta go in, put a dollar trade in. Either So, negative or otherwise, they will not. and a copier, you said, the new copier, what's the name? Flowbot. Flowbot. So I'll install it. Can you put the Apex on it? Yes. No problem. सर एक ऐड बहुत आ रहा है इसका कि टेक प्रॉफिट का हाँ। कि इसमें एक्टिवेशन फी नहीं है यही तो कह रहा हूँ कि इसमें 115 दें तो प्रो की फीस नहीं है ना प्रो की फीस वो एक्टिवेशन फी का मतलब ये प्रो होता है ना जिस तरह लेजेंड में एक्टिवेशन फी क्या आती है 150 एपेक्स में एक्टिवेशन फी 130 बुलॉक्स एक्टिवेशन फी 148 what they're now why are they promoting it let's look at the logic behind it people are going to spend $15 on Bullnox people are going to spend $30 on Apex they're going to blow it on account why not collect 115 look at you have to think from that side so they will get it जाया ही कर रहे हैं अकाउंट तो 115 ले लें उन्होंने जाया ही कर रहे हैं ना तो 115 में जाया कर दें so that's a trick to get you to sign up but those who are milking you will get to meet Jatan again $400 शाम को ले जाएगा $500 every day 10 grand a Many day people, they lose that. sorry The first step. yeah so if the people who are losing an account they're losing 3 times more Bullnox is $15 इसमें No, पांच it's almost 7 times. yeah, so if Bullnox is $15, Yes. this is 115 कि 7 account आ जाए उसमें Bullnox के, right? So if you are not ready for live trading, pick Apex, pick Legends, pick Bullnox. But as you climb the thing that you're like, I understand it, I wanted my life a lot easier. Okay, take profit. That's good. Once you take from take profit, you take some of that money, you put that into मैंने आज तक Yes. अपने पैसे नहीं लगाए इन सारी प्रॉप फर्म थोड़ा सा इनसे रिसीव किया इसमें इन्वेस्ट कर दिया इससे लिया एफटीएम में डाल दिया it's just high cycles so and now I will do my live accounts for you to show you because again people keep asking me how am I doing on Bullnox and I will log into my live account and I'll show you my progress it's okay so like how am I doing with Bullnox So one Bullnox question. is the one with $15. $15 Can I make one? Yeah, you can. No problem.
आपको भी क्लियर कर देंगे, आप पहले टेलीग्राम लिखें। How many Bullnox say you can have? 11 okay. But 3 PS max. नहीं इधर नहीं फोन पे है, ये काम सारा फोन पे है। Sir, one question in terms of live threshold, is Bullnox is more sensitive than No, same वो आपने वो टेक प्रॉफिट में भी सेम है, लेजेंड में भी सेम है कि 100 देखा आपने कहा, लेकिन सर आप स्टार्ट लिख रहे हैं, आपने स्लैश स्टार्ट लिखना था, ये देखिए अब वो पूछेगा ही भाईजान ਉੱਥੇ लिखिया है कि यार स्लैश, क्योंकि मैं कहूँ पूरी दुनिया दे हो गए ना ਤੁਹਾਡੇ नहीं फिर तुसी उधर चले गए, बस क्लिक उस पे लिंक पे क्लिक किया नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था, लेकिन आप अपनी ईमेल डालें, आपने स्टार्ट लिखा और अपनी ईमेल डाली, वो स्लैश स्टार्ट था, आप लिखे अपनी ईमेल। फिर ਤੁਸੀਂ एंट्री ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लॉस करने के लिए थोड़े that wouldn't be an advice decision कि आप अगर अभी आता या never ever, right? सेंड कर 750 आया होगा, हाँ जी सेंड कर। देखिए अभी आपको देखे वो आ गया, एक्सेस ग्रांटेड, इनवाइट नहीं आ गया, एक दफ़ा और लिखे आपने, एक दफ़ा फिर स्टार्ट लिखे स्लैश स्टार्ट, अब फिर ईमेल डालें। सर अभी आप ब्लूनॉक्स का एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी अभी आप बुलनॉक्स मैनू उस व्हाट्सएप पर ईमेल देना सर, अभी इस पे इस लिंक पे क्लिक करना है। हाँ जी क्लिक करें, डन ज्वाइन हो गया, अब आएगा सर, इतनी सी गलती सर आप वो स्लैश वो बकायदा लिखा हुआ स्लैश कर, क्योंकि मैं हैरान था कि मैंने पूरे टेक सपोर्ट को दे दिया कि यार एक बंदा नहीं एंटर हो रहा, मैंने कैप स्ट्राइक किए, नॉन कैप स्ट्राइक किए, वो आप स्टार्ट तो लिख रहे थे, स्लैश मुझे आपसे पता क्या मांगना चाहिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि स्लैश में ना वो आपसे बात नहीं कर रहा ना, आप लिख रहे हैं स्टार्ट, वो कह रहा है, और साथ ही जब आप, ये बॉट है ह्यूमन नहीं है, जब आप स्टार्ट लिख रहे हैं तो वो आगे से कह रहा है अच्छा ठीक है मुझे ईमेल दो, आपने ईमेल दिया, उसने चेक किया बंदा मेंबर है, बंदा एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसने आपको ऐड कर दिया, ये मसला था। सर देखिए अभी जाके सुबह के अलर्ट्स इस ग्रुप के अंदर, सर मैं आपने ज्वाइन किया, आपने अगला स्टेप 3 फॉलो कर लिया? नहीं रिक्वेस्ट करिए, लेकिन आप फोन पे करें ना, आपके फोन पे फिर अलर्ट्स आएंगे। सर मेरा हेल्प कर देंगे, सॉरी नहीं लैपटॉप पे नहीं, फोन पे अगर हेल्प, हाँ जी हम देखेंगे। आपको अलर्ट कैसे आएंगे, फोन पर आने चाहिए ना अलर्ट्स, ओके उसमें तो आप बंद करेंगे तो अलर्ट्स नहीं आएंगे, राइट? ठीक है, तो फोन पे चेक करना है, मैं सोच रहा था फोन पे मतलब करना है। अलर्ट तो आएगा, मैसेज नोटिफिकेशन आपको फोन पर आना चाहिए, राइट? ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं अपना, तो थोड़ा सा फिक्स हो सर, 40 Okay, let's do इस पे आप कहीं उस पे जाएं, इस पे यहाँ पे वो करें। सुपर एरिया। सर आपने व्हाट्सएप किया मुझे? नहीं किस नंबर पे? हाँ जी सर ये थोड़ा सा समझ देखें सर, देखें वो भेजा है उसने कि ये आपके जैसे आखिरी अलर्ट आया था, उसने भेजा है कि ये क्या है, नैस्डैक का अलर्ट सुबह 10 बजे आया है कि मंडे की प्रेडिक्शन है कि अभी ये प्राइस है 20,980, ठीक है, आपकी रेंज अप्रोच हो रही है S1, वो सिर्फ आपको इन एडवांस बता रहा है कि मैं S1 की तरफ जा रहा हूँ, ये नहीं बताता कहाँ से बाय होना है कहाँ से सेल होना है, सिर्फ आपको नैस्डैक में 20 पॉइंट पहले ना बता एडवांस में वो बता रहा है कि भाई उधर जा रही है, तो ये इमेज आपको बता सकता है कि मैं प्राइस की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ या नीचे से, ये एडवांस साथ में इमेज भी आता है ना, ये साथ में इमेज बता रहा है ना कि मैं प्राइस की तरफ अलर्ट जा रहा हूँ, या क्योंकि आपको S2 का नहीं पता कि यार मैं S2 कहाँ से आ रहा हूँ, S1 से आ रहा हूँ या एक्सपेक्टेड लॉस से आ रहा हूँ, तो ये इमेज साथ बता देता है कि मैंने क्या लेना है। अब यहाँ पर आपका शॉर्ट बनता है ना, तो आपने S2 पे शॉर्ट किया, पैसे निकल है, तरफ जा रहा होगा तो आप वहां से लॉन्ग करेंगे, तो ये अलर्ट सिस्टम है। तो ये क्या करता है, जिस तरह आपको ESC ने बता दिया, तो ये पूरा दिन 24 घंटे चलता है, ये सिर्फ एरिया बताता है, सिर्फ एरिया बताता और कुछ नहीं, है, और कुछ नहीं। तो ये इन एडवांस अलर्ट बता देगा। देखिए आप कहीं बैठे हुए हैं, कंप्यूटर सामने है नहीं है, आपको नहीं पता क्या प्राइस है, या आप बिजी हो गए, एक टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आई, हमने कहा अच्छा यार मैं अब तैयार हो जाता हूँ, ES 5 पॉइंट पहले बता देगा, नैस्डैक 30 पॉइंट,
कि यार आप प्रिपेयर हो जाओ, आप अलर्ट हो जाओ। सर एक चीज और, इसको फोन पे मैंने करना है क्योंकि सर ट्रेडोवेट डाउनलोड करें। ट्रेडोवेट आपके पास लेजेंड है, पर्डिया, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडोवेट तो है मेरे पास, तो ट्रेडोवेट में लॉग इन कर लें तो अपना। सैमसंग पे हो रहा है। हाँ हाँ होना चाहिए। ये आपको कौन बताएगा? ट्रेडोवेट की ऐप डाउनलोड कर लें, मैं आपको सेट नहीं, मेरे करवा, पास है। मैं सेट करवा दूं। लेकिन फंडेड कंपनी कौन सी है? लेजेंड। लेजेंड है। ठीक है, लेजेंड का यूजर, लेजेंड भी है, बुलनॉक्स भी, लेकिन वो रिथमिक में, वो रिदमिक डाउनलोड रिथमिक कर, वाला भी है। हाँ हाँ वो दोनों डाउनलोड कर तो सिर्फ ये जानना है इसमें कैसे होगा, ये जैसे 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 मैंने कर दिया। लें। सर लिखें, यहाँ लिखा है नीचे रजिस्टर, सॉरी ये आपका डेमो, यहाँ से लॉग आउट करें, यहाँ लिखे साइन इन, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालें लेजेंड वाले ने जो आपको दिया, बस दैट्स इट। फिर आपका लेजेंड का अकाउंट इधर खुल जाएगा। नहीं वो तो खुल जाएगा। नहीं नहीं मैं सिर्फ ये जानना नहीं, चाह रहा हूँ। मैं आप वो अगला तो करें ना, एक दफा खुले तो फिर यहाँ से आपके ऑप्शन आ जाएगा ट्रेड डालने का, स्टॉप लॉस लगाने का, टीपी लगाने का। चार्ट्स नहीं आते, सिर्फ अच्छा आपको वो सिर्फ डाउन आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दैट्स इट। तो रिथमिक में भी ऐसा? रिदमिक में भी ऐसा ही है। तो आप मार्केट पिक कर लें, अकाउंट पिक कर लें, ट्रेड कर लें। आया नहीं, एक बार हेलो लिखना, एक मिनट। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ऐड कर देता उन्होंने, ਤੁਹਾਨੂੰ एक मैसेज भी आ गया। तीसरा स्टेप फॉलो कर लो। तीसरा स्टेप सर समझ नहीं आ रहा, वो क्लिक करने को कह रहा है, मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप जाएं और उसके साथ चैट शुरू कर दें ना, स्लैश स्टार्ट करें। हाँ देखो ए तीसरा स्टेप ए हैगा, ठीक है। ਇੱਥੇ करो स्टार्ट, ਇੱਥੇ ਹੁਣ टाइप करो अपना ईमेल। Please enter your registration email to Perdia. जो आपने सुपर एरियाज की ईमेल है। Email and Telegram ID are not correct, but you are not authorized. ਇਹ ਦੇਖਿਆ ईमेल नॉट फाउंड। सर ਇਹ ईमेल ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਹੂ ਵਾਲੀ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਸਲੈਸ਼ ਸਟਾर्ट। नहीं नहीं, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ तो स्लैश स्टार्ट। KG ये कर दूसरा तो नहीं। आपने मुझे कौन सी ईमेल भेजी है? हाँ। KG Garg 1989@outlook.com। मैं भी देख लेता हूँ कि आपको ऐड होंगे। हाँ जी, दोबारा दोबारा लिखें। KG Garg 1989। नहीं नहीं, उसके अंदर वो जब ईमेल मांग रहा है आपसे, यानी इस व्हाट्सएप में नहीं। नहीं एक्चुअली टेलीग्राम यहाँ पे भी चलता है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ देखो फिर इतने ईमेल दोबारा लिखो जी याहू वाली। मैं एक्चुअली अवॉइड करता हूँ फोन को, कंपैरिजन सिस्टम पे ज्यादा करता So कैसे एक सेकंड, तो देखो एक्सेस ग्रांटेड, इस लिंक पे क्लिक कर लो, देखिए ज्वाइन हो गया, आ गया सर। That's it। अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है देखो इतने क्लिक कर दो ज्वाइन नो, ये देखो लाइव मेरा जेड़ा मैं बोल रहा हूँ वो भी लाइव आ रहा है। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। हेलो जी, है। सर नहीं ये आ ही नहीं रहा। एक सेकंड। अब मैंने आपने ये चीज नहीं डाली, देखिए स्लैश वो नीचे कर दिया, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर। not authorized to use this area। आपको डेली में भी एरिया नहीं दी, मंडे के स्टार्ट करिए एरिया आपको ये इसीलिए कह रहे मैं ढूंढ लिया। You're not authorized to use area service। Go slow, just please take it over। Those three, yes। No, 500 because they changed the limit to not make it to 4100, 40, so 50 for 100, and then you can take out 1,000 from each. Not more than I think 1,500, wait, 1,500 good enough. every 8 days. Every 8 days. So this is the goal. I'm going to show you what I did here. Okay. So live. We're very close. Please don't mess up from here. Please. This is a big payout. So touch wood, give sadaqah. So because it's a huge payout.
So every time people get to know, things go When south. I come, it's going to pay, it's all 2,500 They will for not each account. 15. I will double check for you. Thank you. You can close for now. I know. Okay. देखिए ये मिड बैंड एरिया के ऊपर है तो चांसेस आपके ज्यादा ऊपर जाने के एरिया से ऊपर अगर आपकी ब्लैक कैंडल आ गई 30-20 में एरिया के ऊपर या एरिया के नीचे और कलर चेंज हो गया उसके ब्लास्ट होने के ज्यादा प्रेडिक्टेड ज्यादा है मिड बैंड का बता रहे हैं मिड बैंड नहीं अगर जो कौन से मिड बैंड पास हो सकते हैं जो अबव द एरिया ग्रीन हो बिलो द एरिया रेड हो one thing more 30-20 ਦੇ SRE बन के आ रहा था मिड बैंड चल सकता हाँ जी सर चल गया है देखो नॉक मार दे गया है तो अगर आपने ये अब तो यहाँ पर वो था कि मैं सिर्फ 2 पॉइंट क्यों लूं साडा डिफरेंस नहीं है यार हाँ then go touch the next area हाँ जी सर मुझे थोड़ा सा वो वैल्यू एरिया की जो आती है वो आपको पूरी वीडियो देखना आपने डाली बनाई आपको चैनल के आप लोग सुपर एरियाज पे पढ़िए वैल्यू एरिया के लाइंस Okay. Yeah. Yeah, he's in the middle. Good. Now he's exactly in the middle. Okay, so this is my personal journey along with you guys to explain how I did the things, how I planned it. And so the account is called Bullnox. So this is the company Bullnox allows you to take accounts for relatively inexpensive, very, very cheap. How much? So I bought their $50,000 account for how much? It's $15.75, so I will write $16. Okay, so this is how stage one begins. 50,000 and they give you 2,500 threshold. You have to go to 53,000 and not zero. This is your stage one. Okay, for $16, I can't get any cheaper account in this industry. Number one, my conditions, make $3,000. Max loss, 2,500. Days, 1 day pass. What? Oh. Number four, live threshold. So these are the rules. That's it. Simple as that. For EA. For EA, this is stage one. EA also you can clear in 1 day. 1 day. ये एक दिन में. Same as आज मेरे साथ बड़ी बदकिस्मती हुई. $2,809 बने हुए थे. कल आपको अकाउंट दिखाया. मैंने सुबह उठ के लॉन्ग कर दी एक्सट्रीम हाई लो से. अलर्ट आया. वो लॉन्ग तो की लेकिन पोजीशन क्लोज नहीं की. वो पहले गया प्लस 500 पे और फिर वो गया माइनस 2200 पे तो मेरे $15 जाया हो गए. But it's okay. But I'm saying क्योंकि 29 क्योंकि ये था ना मतलब उड़ गया क्योंकि 100 बनाना था उसमें 2400 जाया कर दिया. इट्स ओके वो हो जाता है. गलती से मैंने पोजीशन क्लोज नहीं की क्योंकि उसने मुझे प्रॉफिट दिखाया था. मैंने क्लोज नहीं किया एंड देन आई लॉस्ट $15 ये दिस मॉर्निंग. Yeah, you can do the hedging. 2200 प्लस 500 मतलब 2700. हाँ वो तो वो उसने 2700 नहीं वो उसने पहले 500 और फिर मेरा थ्रेशोल्ड 2200 पे था तो उसने वहीं पर बंद.
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2900 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ $100 ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2904 ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਨੀਚੇ, तो anyway, so it's okay, last $15. So this is your target, 50. So I can lose it too from 2904. I'll show you. You're gonna say, what the hell did you just do? So, but PAs, I don't touch. Each PA made $400 from 2 areas. So this is your EA. Make 3,000. Don't lose 2,500. 1 day pass is okay, and live trailing threshold. When you clear this stage, you go into a PA stage. So Bullnox, same idea, but 5,000. Sorry, 50,000. I planned it slightly different. So me and a couple of other buyers, we said, all right, how much do they pay you? In this account, they will pay you maximum $1,500. So we worked out a plan. We said, all right, how can I do this? So we decided, let's turn a $50,000 account and add $4,100 of profit to it. That's how I started to work with it back in April, mid of April. I have screenshots and everything, and I'll show you. So first, I made my PA, I paid $148. All right, EA went to PA. Now I don't have a stress of time. I can take as long as I can do infinite number of time. How much money I can make in 1 day. So I looked at 4,100, my target, and I said, what is 40% of 4,100? It works out to 1,240. So you set your own target. So I set a target that I will not withdraw any money until my account has $4,100. So what is 40% of this? 1,250. It's not 450. It's not 600. So you set your own targets. They ask you set your own target. You can set a target of 10,000, but then you can make 4,000 in 1 day. So you set your own flexible targets. So no time. Oh, there is no limit to make it Yes, daily. exactly. But what you can do daily, you set your own. Okay. They ask you, we are not gonna bother you how much money so I decided before getting a payout, I want my account to be 4,100. Well, you decide. So I decided. They said 5,300. No, they said there's no limit. They don't ask you anything. You set your own target. No, when you want to withdraw the money, 5,300. So I'll tell you why I chose this number. No, I know that's your plan. But what is their rule? 5,300? They want to do 53,500. 3,500. 35. That's PA, right? PA की बात हो रही. So, and I'll tell you why I picked this plan with the proper planning. So I said, all right, if I make it to 54,100, how much money they will give me? They will not give me more than $1,500 in this account. I said, okay, no problem. So I took $1,500. Where do I sit? 2600. So I fell within the threshold. So my live threshold stops at 5260, just like Apex does. Yes. So any money you add on top, there's no live threshold. So where does my live threshold stop? At 52,600. So I said, I want to not just make it to 3,500. I want to withdraw. So I made 4,100. Okay. I took out 1,500. I have a full buffer. I don't have to worry about live threshold in that case. So this is why this number is critical. So I said, all right, I will take 50. This was done in around 20 days, 100, 200. There was a good day too, made 1,000. So I made to, now what I do is, and so payouts are done in 10 days. So they will not give you any payout before 10 days. So that's how they would like to give you. So I said, all right, I'm not going to worry about this 10 days. I want my account balance to go to 54,100. And then I will request my payout. And then that's how I will cycle through. So let me show you the real account, real money, real payout, real wise, no BS, because then you get to learn by experience. Now, one question. Yes.
if, for example, you decided one day you are going to close that, how much money you have over there? Nothing until third payout. They don't give you anything below 2,600. So 52,600 is It's your not base. yours. It's not yours. So look, I log in right here. But the Apex is not like that. Yeah, Apex after fourth payout will give you everything. These two. Apex, you have to keep 52,600. Same. No, you Apex, you have to, when, for example, if you make a 52,600, they give it to you 2,500. Not anymore. They changed the rules. That's what I want to take you. They changed the rules though. Since then, lots of rules changed. I didn't All know right. that. This is my account. So I've logged in. So let's look at one account profile. Let me zoom in so guys at home can watch the screen. Okay. So this was yesterday of 22nd, right? This account, I have it for 40 days. Out of 40 days, this is my fourth payout. I'm going in my fourth cycle. I traded for yesterday. That was my second trading day. Today it becomes my third trading day. What is my balance here as of yesterday? Almost 5,000, 5,100. What is my threshold? 52,600. Yesterday I made $315 and I am below my consistency. How many payouts I have received from here? 3. From this account, I managed to pull $4,500 from one account. That's good. And I'm ready to go in 20 days. in 40 days. Sorry, 40 So days. 40 days, 4,500 US dollars. How Just much? one account. One account. How much did I spend? 100. 150 plus 15. उसको पहला में ले गया 4,100 पे. Then I took out 1,500. My account balance fell to 52,600. I built it up again. Then I pulled out. So my target is to get it to 4,100. Then I take out 1,500. Look, the next is so easy. I only have to make $1,500 the round 2 and the round 3 and the round 4. I don't have to work for 4,100. Yeah, just 1,500. After the 50,000, Yes. this $2,600 is yours. No, You are no, the no, one- no, No, they don't give you. Now, no company. Every company wants you to keep a buffer. They will not. This is your money. It's not my money. My money is above 20. इसके ऊपर मेरा money. ये बफर उन्होंने रखा हुआ They है. gave you only 50,000, right? फिर 50,000 नहीं. मैं ये कह रहा हूँ. देखें, हाँ मैंने कितना बनाया? 4,100. ठीक है. 50,000 को छोड़ दे. 40 days में? नहीं ये 40 days तो टोटल अकाउंट को हो गए. पहले 20 दिन लगे ना. मैंने 50,000 के अकाउंट में 4100 कर लिया. ठीक है. मैंने उसको कहा, वो क्या कहते हैं, ये पहला 2600 हमने आपको नहीं देना. देना ही नहीं है. बेशक आपने कमाया, नहीं देना उन्होंने. ये उनका रूल है ना. एपेक्स भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता. वो आप ही के पैसे बफर के लिए आपके है ही नहीं. वो सिर्फ वो बफर में रखते हैं ताकि आपका अकाउंट जिंदा रहे. How about if you go, for example, to the 5,000? Yes, Can you withdraw the No. 2,400? No, just 15. So that's why I'm only working with the maximum I need to work. Okay. So मैं पहले अकाउंट यहाँ ले गया. ठीक है. मैंने यहाँ से निकाले 1,500. Then take away 2,600, right? You just make 1,500 So withdraw. मेरा 2,600 अकाउंट है. मैं इसको कुछ कर नहीं सकता. अकाउंट तो जिंदा है ना. So sir, technically, Huh. they are saying we give you a limit of 50,000. If 50,000. you have to make minimum 2,600 as a threshold, Yes, correct. and the maximum we will give you payout of $1,500. Yes, That's exactly. why it is 4,100. Exactly. Okay. तो ये इसका रूल है. आपको इस 2,600 को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा. ये आपने 2,600, उन्होंने आपको उधार दिया था 2,500 का. अब आप इसको गेम को ऐसे देखें. आपने day 1 PA लिया. So this is your day 1. You paid $148 to get your account, right? आपने कितने पैसे लगाए? 148. They said until you get to 52,600, that money is ours, right? We are loaning you. Loan दिया ना आपको. आपने तो 148 नहीं है. आपने तो 26. आपने 2,600 बना के उनका लोन उनको वापस कर दिया. अपना बफर रख लिया. ये कब मिलेंगे ये भी मैं बताता हूँ. मिल जाते हैं.
ये मेरा payout number 1 हो गया. Payout number 1. Okay? In that case, so from 41, we can take away 2,600, whatever. No. They only allow you to take maximum 1,500. Take away, if we take away 2,600, then we will end up having 1,500. They don't let you take. No, in my No, head, you say just you to put it on the side, you have just $1,500 to withdraw. But they don't do that. Before you just to withdraw. understand, whatever money we make on top of 26. Yeah, that's what I'm saying, that's the difference. But here's the From problem. 41 to Here 26. आपका account पहला आया. You got your account to this number. Hmm. You don't get any money. Okay? Zero money. तो जब हम पीए लेते हैं तो हमें ये मिलता है सर 50,000 में 50,000 नजर और $2,500 का बफर नजर आता है आपको एक जैसे ईए में होता है आपको एक आपको 50,000 दिखता है ये ऐसे दिखता है ये दिखता है तो इसमें पीए में वही दिखेगा बिल्कुल 50,000 रखे हाँ अच्छा उसके बाद में आपने जो 2,600 बनाया that's not yours actually they cannot give it to you. Okay. That's not ours, but I'm trying to say like from 4,100, when we take away their money, 2,600. So you are left. So I took that. 26 is not mine, but whatever we have. Yes, वो ले लिया ना payout ले लिया तो ये छोड़ दिया ठीक है अब वो कहते हैं they can give you money, but here's the thing. If you turn the balance, if you make $3,500, they will give you $500. So they give you a little bit money, but it's not worth it. Why don't you just make 4,100 and then take out 1,500, leave to up. Now here's where it gets easier. This is the most struggle you will do in your PA to get to 4,100, right? Once you take out 1,500, all you have to do is add 1,500 Again. More. Take out, and you go back to 4,100, you take out 1,500, you're down to 2,600, you add 1,500, you go to 4,100, you take out 1,500, it's just a repeat process. So I've done this second payout. I've done my third payout. Look, 3 payout aa chuki hai. But you said after fourth payout, they will release everything. whatever is there. It's there. So I can now, once this written for, whatever this account balance is, 5,000, 6,000, 8,000, they can give me full. I have demonstrated. 600 वो भी निकल जाता है. technically become वो काफी unlocked. का बन जाता है. Unlocked हो जाता है 4 payouts के बाद. अगर आपने वो निकाल लिया सर तो फिर खत्म अकाउंट जीरो खत्म हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा टेक प्रॉफिट में भी ऐसे होता है आप पूरा 2000 नहीं निकाल सकते Nasdaq is in S2. Oh, S1. सर लेकिन एरिया तो आ चुका है ना मैं अलर्ट तो आ चुका है ना पहले ही आ गया तो फिर रीबाउंस हो रही है अब देखिए अगर वो मिड बैंड लिए होते कहां से कहां पहुंच जाते हैं इट्स ओके सो दिस इज द सिस्टम आई हैव बीन वर्किंग and this is just one account. I will log in and I will show you I'm parallel working with 3 accounts, right? So you go right here, your reports, account number 2. How many accounts you say you can have? 3. Just a 3. So which is okay. Look, yesterday in this account I made 356. My balance is 5,100. Copier laga hua na, same account. And I already got 2 payouts out of this. Now, third account. There you go. Take a look at this. This I'm working towards my first payout, and day number 4 is done. Yesterday I made 375. So I have multiple accounts running, and you can take a look at my payouts. Every account 10 days. Yeah. So 1,500, 1,500, 15, like 3,000, 3,000, 6,000. यार $7,500 उन्होंने मुझे दे दिया और क्या मुझे चाहिए 15 दिन के बाद देते हैं हर 10 दिन के बाद 1,500 का चेक आ जाता है हर 10 दिन के बाद क्योंकि पहली क्लाइंब मुश्किल है बेस कैंप पहली मुश्किल है उसके ऊपर तो सिर्फ मैंने 10 दिन में 1,500 बनाना है That's important to so make it base. so the first is the work hard to make the 4,100 and then for the next jumps are so small they're just only every 10 days you milk this system just keep So every 10 days only they get. yes every 10 days they After 4th payout, still the same time. no after 4th payout it drops to 5 days. So you just have to work 5 days and then you can withdraw the whole account. So it kind of becomes their life. Can you explain this right now about the Apex? I'm in now. You have to get your account to 4,100. Okay. Then Before- I have it. Please work 50 a day. You have done the majority of the work. Yes. You are $1,000 away. Just work with 50 a day.
and then maybe take your payout in 20 days. But go slow. Micros, $50 done. $50 done. That's what I recommend. What is other rules on the No, exchange? okay, I have to ask you one rule. In this account, Yes. have you ever gone negative more than 450? Maybe. They may object that. If they do, we can trade again for 8 more days. That's a possibility. If you do that, for example, one day, what My happens? recommendation to you is don't ask for a huge payout in once. Okay, Go in, request 1 or 2. okay, And wait 2 days. When they say approved, request 1 or 2 more. okay, perfect. But otherwise, they'll ask you for Zoom video when it's a big chunk coming. So they will ask you for a lot of information. Who's trading for you? Why are you doing this? Just request 2. Get Just some- 2 accounts. 2 accounts, and then up to 20 accounts slowly, right? Okay. So my recommendation, because I've seen guys who request full 30,000 and they say, hey, come on, man. Okay. So please go slow. That's so ये है जी मेरा Bullnox का account. हाँ जी Nasdaq सर मेरे सारे ट्रेड हो चुके हैं वैसे थे चलो सर हो गए उथे S1 टच हो गया डन हो गया सर yeah, but 30 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ नहीं 30 तक सर 3 ਵਾਰੀ टच होया पूरे 3 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ सर अगर S1 नहीं लिया ना फिर ਤੁਸੀਂ मिस कर देता S1 डन हो गया जी नहीं 30 2130 नहीं मैं 21000 तो मुड़ गया ना नहीं निचला पेड़ तो हो गया ना S1 तो S1 डन हो गया ना तो आपने 21,000 को लिया था तो या नहीं लिया कुत्ते खड़े थे हाँ ठीक है लेकिन कितना ऊपर गई है 20,000 कहाँ तक गई है ये 20,008 तक नहीं 21,000 के नंबर को टच किया उसने 21,008 अच्छा ठीक है 21,008 पे है तो अगर 21,000 नहीं हुआ 30 पे तो एरिया डन हो गया टेक्निकली ऑफिशियली ईएस का एरिया भी असल में ईएस तो अभी दूर है जी ईएस तो अभी S1 से काफी दूर है आई थी क्लोज 5822 तक गई है 2930 का नंबर है ना हमारा हाँ, तो अभी अलर्ट भी नहीं आया होगा 5 तो अलर्ट नहीं आया डाउ भी टच करके गई है जी एक्चुअली डाउ सर डॉट टिप तो मुड़ गया ਤਾਂ ਕਰਕੇ Nasdaq ठीक है देखें सारी सेम चल रही है Yeah. रसल डाउ सिर्फ ईएस ने S1 नहीं टच किया बाकी सारों ने कर दिया So this is the Bullnox account. Yes, there is a coupon code for Bullnox. It's called Super Areas. It works for 50K account, nothing cheaper. So, हाँ जी Beside these, हाँ जी कि एक दफा आपने ये बताया था कि जैसे डॉरीज बन जाती है ना नीचे विक्स बन जाती है जी तो जितनी ज्यादा लंबी विक नीचे बनती है उतने ऊपर उतना ही ऊपर जाता है राइट जी तो अब आप मैंने देखा कि आप जो है वो बॉटम ऑफ द बार लगाते हैं हाँ जी 30-20 में आपने उस वक्त जब स्टार्ट में बताई थी ये बात तो तब आपने कहा था कि टॉप ऑफ द बार लगा लेकिन वो होता है कि अगर आपने बॉटम ऑफ द बार मिस कर दिया है ना तो अगर आपको आ गई है विक लगते आ गई या अगले बार के ऊपर लगा दो क्योंकि नहीं वो हाँ। ये चीज अगले बार के ऊपर लगाना है ना उस बार पे तो नहीं कैसे पता नहीं होता कि वो नहीं बेशक हो लेकिन अगले बार से ऊपर वो उसको ब्रेकआउट कहते हैं वो पिछले को ब्रेक करेगा 4 टेक्स निकल जाएगी तो अगर वो रिजेक्शन विक नहीं है तो ये अकाउंट्स हैं आपके एंड there you go it's not that difficult so what do I have right here is I have my so here's the good thing about them once you have 3 PAs the remaining go into a pending state meaning your monthly fee finishes so if I manage to blow these I don't have to make EA again they're just ready so I pass them all together I just have them stacked if I blow any of these, this will move up. I'll pay 148, 148, 148. So as if I blow, I just keep stacking more at the bottom, right? So it's, and then when you have collected enough money, you go aggressive. You're like, man, they don't have any expiry. जी सर, ये Bullnox के Apex के 20 हैं, Perdia का 1 है, Legend के 10 हैं, Take Profit के 5 हैं, My Funded के हैं. टोटल 62 अकाउंट्स हैं कहीं इधर डील क्लोज हो जाती है तो 15 दिन बाद इधर हो जाती है को 20 दिन बाद ये हो जाते हैं
ओ ये 50 इसमें डाल दिए 50। आजकल मैं ज्यादा लूट रहा हूँ बुलनॉक्स को, सस्ता अकाउंट है ये। मैं एग्रेसिव खेलता हूँ ना, मैं आज मैंने 2.5 मिनी से डाल दिए थे, थोड़े से पॉइंट लेने हैं, $370 इसमें क्या है। सो बट वंस यू गेट टू दिस स्टेज फिर आप माइक्रो के साथ सर माइक्रो में करके 4100 पे बचाया है। 5 माइक्रो कहीं जरूरत पड़ी एवरेज कर दिया, लेकिन एरिया ट्रेड मेरे पर टाइम नहीं होता कि मैं मिड बैंड करता रहूं, मुझे सिर्फ एरिया चाहिए। ऑर्डर बोलते हैं आप। नहीं माइक्रो होता है मिनी का छोटा वर्जन। एक मिनी और ईएस है ना, MES, उसको माइक्रो कहते हैं। हाँ तो आप बोले 5 5 माइक्रो का मतलब होता है कि 5 लॉट लगाता हूँ माइक्रो ऑर्डर। नहीं ऑर्डर एक ही होता है, लॉट 5 होते हैं। सर आपकी लेक्चर 1 चाहिए अभी अगर आप ये देखें, ये लिखा है क्वांटिटी। अगर ये क्वेश्चन है, ये डेंजरस क्वेश्चन है, आप किससे क्वेश्चन दे Kind of a copy, sir. $500 and $50, right? ये क्वांटिटी 5, ऑर्डर एक ही लगना है सर, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ वो, लेकिन ऑर्डर तो मेरे प्राइस पे एक ही लगता है ना, तो 5 ऑर्डर लगा देता है। हाँ लेकिन मैं यही चीज ठीक है मुझे सॉरी ट्रेड एक ही होगा, लेकिन ट्रेड commission एक है तो ऑर्डर ठीक। commission 5 टाइम देना पड़ेगा। मुझे कमीशन की स्ट्रेस मैंने कौन सा देना है? नहीं वैसे उनको प्लेटफॉर्म कौन सा है वो? निंजा ट्रेडर, इसमें रिदमिक का प्लेटफॉर्म। और इसमें आपने MNQ में सर बोला था 35 पॉइंट आप लेते हैं ने 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पॉइंट का, नॉट टिक्स। पॉइंट्स पॉइंट तो बहुत ज्यादा नहीं है यार। 2 माइक्रो में मैं आज तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया यार, मैंने लगाता ही नहीं है। वो उस दिन हम बैठे हुए थे, हम 90 मिनट एक ट्रेड में बैठा हूँ मैं, 90 में। आई नो और कुछ भी नहीं, मैं भी आप जल्दी निकल गए। मैं थोड़ा मैंने आपसे बात हो रही थी, मैं और सारा ग्रुप बैठा हुआ यहाँ, आया था काफी। नहीं 2-3 दफा आया मैं, और वो फिर गया 550 पे। सर फिर बाद में वापस नहीं ठीक है, लेकिन जो नीचे गिरा 250 पॉइंट, तो हम सारों ने 20 ली, आपने कहा आई एम आउट। मेरा दिल यार नैस्डैक के लिए ना दिलेर होना पड़ता है, देखा जाएगा। वो आपके पीछे बैठे हैं, 10 लॉट में थे और मैं घबरा रहा था। 10 लॉट में थे वो पहले वो -1800 देख के आए, वो कहते हैं पीए के अंदर, यार पीए थे ना, अच्छा ये था, फिर ठीक है। तो मैं 5 में था, वो 3 में थे, आप पता नहीं 3। सर इस हिसाब से बुलनॉक्स ज्यादा अच्छा है, आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं इस तरह से इतनी डेयरिंग करने के लिए। सर एक और मैंने 2900 भी उड़ाया हुआ है 15 मिनट के अंदर अंदर। तो नैस्डैक वो गिरी तो ले ही जाती है। सर वेरीफाई कर ले एक बार, मैं कर दूं। हाँ नहीं रिदमिक हो 50,000 वाला, $15 $50,000 सुपर एरियस कूपन है। जी ऐप पे ठीक है जी। So you have choices, Legends, Apex, Perdia, all of these things, lots. सर टेक्निकली जैसे हमने ये फर्स्ट अभी ये बनाया है $15। इसको आपने क्या करना है, 50,000 का। अब आप संडे को अभी जाएं superAreas.com पे, टीम के साथ चैट करें, वो आपका ये बुलनॉक्स का अकाउंट आपके निंजा के साथ जोड़ देंगे, ताकि आपके शुरू हो जाए ना। ठीक। तो जब ये हो जाएगा तो आज से आपकी डेडलाइन शुरू है। थोड़ा सा आपने रश कर दिया, 2 दिन बंद है दरमियान में, तो अब आपके पास अभी मैंने क्रिकेट पे नहीं ना करें। मंडे को लें, 2 दिन तो बचाए ना, ट्यूसडे को लें, मंडे को हॉलीडे है, सेल तो लगी हुई है 31 मई तक, तो ट्यूसडे को लें, तो आपका फ्राइडे बच गया, सैटरडे बच गया, संडे 15 दिन में शेख हो कंजूस हो। just create a new user ID. यस नो सेम अपना यूजर नेम बना लिया, अब बाय मंडे को कीजिएगा, ट्यूसडे को सेम यूजर नेम के अंदर बाय हो जाता है। Then the validity goes from that. हाँ एग्जैक्टली तो आपके 4 दिन बच गए ना। आज तो ट्रेडिंग डे निकल गया, मंडे को वैसे ही क्लोज है, तो आप ट्यूसडे फ्रेश पहला दिन होगा। ऑलराइट 11:48 डन फॉर द डे। 6 बजे शुरू हो जाएगी ट्रेडिंग। हाँ नहीं मंडे को शाम को 6 बजे, तो मंडे ले लें अगर आपको ट्रेड करना है, वरना मंडे ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी तो सर मैं आऊँगा, मैं इधर ही आऊँगा, क्योंकि 1 बजे तक मार्केट खुली है, कुछ दिहाड़ी डालनी है ना उसके अंदर। मंडे को 1 बजे तक खुली है, इट्स ए हाफ डे। तो मैं तो पहुंच जाऊंगा, तो डैनियल नहीं होंगे, एरिया नहीं होंगे, इस एरियस नहीं होंगे।
हैं वो 1 o'clock। $15 का अकाउंट लिया है, इसमें भी डेली लिमिट आप इतने से ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, आप पहले दिन ही 3000 बना लो, वो शाम को आपको स्टेज 2 पे ले जाते हैं। And then we have to pay 150 extra more. करेक्ट, यस यस, फिर राउंड 2 के 150 देने। यस Apex before you make it 2600. यस, They give you no, 2500. you kind of missed the bridge by 3-4 weeks. New rules, it's okay, better upper everything happens for a reason. 4100, because round 2, round 3, round 4 easier. I made a mistake. I purchased the monthly. I didn't purchase the lifetime. It's okay. What can I say? That's bad. It is times 20. 3,000 something every month. So take it out, kill those accounts. And I'm going to make Yes. it. Yes. Exactly. I just make it 2 payments. Yes, exactly. $3,000, then I come out. Correct. It's not worth it to then I'm going to start from scratch. You can make what is accurate thing to 10 year But I need to do it large account, large amount, because if I continue, it's going to be the time comes to pay. अपना बैलेंस से कनेक्ट करना है सर, इधर अपना Daniel sir होंगे मंडे को? नहीं, Monday Daniel is not here. सैटरडे जो हमारा लगता है इंफॉर्मेशन सेशन, वो जूम पे भी कर सकते हैं कोई? नहीं, वो गो टू मीटिंग में आपको मिलता है, आपको आईडी मिलती है। किसी ने दूसरा सेशन करना है जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वो जूम पे नहीं होगा, वो होगा अब जून में होगा, वो मैं करता हूँ। अच्छा, वो डैनियल नहीं करते। जो सैटरडे वाला, जो सैटरडे का अब जो मैंने सेशन करना है वो करना है। क्लास तो सर लेंगे? नहीं, वो तो क्लास देंगे ना, मैं करूँगा 7 जून, नहीं 7 से अगले। किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो 14 जून को आए। 14 जून उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, तो 14 जून को वो मुझे सुन सकते। क्या कहते हैं, ऑटवा? हाँ, पूरी दुनिया से 14 जून को मेरा सेशन जाएगा लाइव। हाँ, लाइव। लेकिन वो प्रीवियस सेशन सारे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सारे पड़े हैं पिछले सैटरडेज के। जो मैंने सेशन किया है लास्ट सैटरडे ऑन, ये आ गया ना 17 को किया है। 17 मई को मैंने 5 घंटे का सेशन है। वो सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं, पहले 90 मिनट सुन लेना, 5 घंटे तो सारा टेक्निकल भी होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Why is it closed? Memorial Day. You are into the Memorial Day in US. So Monday को नो ट्रेडिंग है, फिर हम ना नहीं, देखिए ट्रेडिंग है, मार्केट खुली है, शायद इक्विटीज बंद हो, गोल्ड खुला हो, क्रूड ऑयल। मैं तो आ रहा हूँ, तो उसमें कुछ खुला हुआ तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं तो एरियाज नहीं है, डैनियल की ब्रीफ नहीं है, तो जब एरियाज ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। और 1 बजे तक खुली है, अगर जो भी मार्केट खुली है 1 बजे बंद हो जाएगी, अर्ली क्लोज है, और फिर शाम को मंडे को 6 बजे खुलेगी। हमारा ट्रिनिटी वाला ऑफिस बंद है, सब बंद है। आई एम जस्ट हियर फॉर, लेकिन थोड़ी सी अपडेट्स कर लेंगे यहाँ सिस्टम को। All right, guys.
All right, I'm going to shut it off. The price went from almost S1 back to S2. I think S2 is becoming a base. So close the trades. तो सर जब हम बेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से जो S2 है वो बढ़ा है 5800 पे, हाँ एंड आवर प्राइस इज लेट्स से $5810. तो जो बेस जो नहीं, उसका बेस का कोई मैं चार्ट्स नहीं देखता, मैं सिर्फ 30 मिनट का चार्ट देखता हूँ जहाँ पे एरियाज आ रहे होते हैं। आप नहीं देख पाते क्योंकि आपको ऑथराइजेशन नहीं है। तो मंडे ट्यूसडे को वो एरियाज ले लेना ताकि वो आपको नज़र आ जाए कि ये हमें चार्ट्स वो मिलता है, लेवल्स बने होते हैं। तो वो मैं उसको दिख रहा है मेरे को। नहीं, वो लाइन है या शेड है? लाइन वो नहीं है S1, शेड्स होने, वो देखिए शेड्स बने हुए हैं। नहीं, इसलिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिगिनर्स में आपको एरिया दे दिए ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब प्राइस एरिया के अंदर जाती है ना तो आपके दोनों चार्ट रेड होते हैं। आप कहोगे यार रेड में मैं बाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी 4 क्लासेस ये कहती हैं कि रेड में सेल करना है, और आपको एरिया पहले दिन दे दिया। आप कहोगे यार मुझे 4 क्लासेस पढ़ाई के और एरिया में आप कह रहे हो कि, तो इस वजह से पहले 23 दिन तो आपको एरिया मिलता ही नहीं है। मेरे साथ पता क्या हो रहा है, जैसे अब ये देखो, मैंने दोनों में मैं कम वॉच कर रहा हूँ अभी। नहीं, आपको मैंडेटोरी है सर, मैंडेटोरी है कि दोनों मेरी वीडियो देखें कि मिड बैंड ट्रेड कैसे लेना है। तो वो इधर रेड है, इधर भी रेड है, अब मिड बैंड पे सेल का ट्रेड वो जा चुका है पहले। हाँ, अब अगला मिड बैंड आपका बनेगा 5811 पे। यस ओके, हाँ जी, से रिलेटेड एक चीज है, पर जी वो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक हाँ जी, है। मैं वोट पे आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये हमारे पास हमारा पीसी है, राइट? हाँ जी, अच्छा ब्लैक मार्कर ले रहे हैं इससे अब, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो हमारा पीपी से जो नीचे का है सारा, ये हमारा ये जो 3 है या 4 है, ये हमारा ये सपोर्ट जोन है, राइट? जी, सपोर्ट जोन हो गया, और ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस करेक्ट। जोन हो गया, राइट? वैसे तो हम इसको सपोर्ट कहते हैं ये वाले हाँ सारे, जी, लेकिन जब हम इसकी अपर रेंज देखते हैं और जब ये दोनों ही सपोर्ट हैं। हाँ सपोर्ट है, लेकिन जब प्राइस लेट्स से हमारी प्राइस यहाँ पर है, हाँ, तो ये तो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस बन जाए 100% करेक्ट। लेकिन जैसे ही ऊपर प्राइस ये भी ऊपर फिर जा भी रही है तो ये हमारा सपोर्ट बन करेक्ट जाएगा। करेक्ट। अगर तो ये नीचे जाती है ना, हाँ, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, 100%। एंड देन वी कैन गो डाउन। और अगर हम इसको ऊपर जा रहे हैं, इवन दो ये S1 है, ये रेजिस्टेंस बनेगी, करेक्ट हमारा रेजिस्टेंस करेक्ट। फिर इस तरह, और इसी तरह जब ऊपर से हम हाँ, नीचे आ रहे हैं, correct। तो ये हमारा वैसे तो रेजिस्टेंस एरिया, हाँ, तो लेकिन हर ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंडिंग के प्राइस का है। अगर हम अपर रेंज और लोअर रेंज को समझते हैं तब हमें फिर वो समझ आती Correct, है correct। कि रेजिस्टेंस कैसे, ये है तो रेजिस्टेंस, लेकिन ये सपोर्ट के लेकिन साथ ये रेजिस्टेंस बन गया तो ये इसका यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, फिर जब ये आया तो ये सपोर्ट बन गया, करेक्ट फिर ये आया तो इट डिपेंड्स, क्योंकि आज एक वाहिद कुछ अरसे बाद दिन था, प्राइस खुली एक्सपेक्टेड लो पे थी, तो हमने कहा S2 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, S1 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, तो प्राइस गिरी नीचे, S2 पे गिरी, जब नीचे आई तो S2 बेस बन गया, वो सपोर्ट बन गया, मैंने 930 से लॉन्ग किया, वो निकल गया। उसके बाद S1 आया, S1 पे जो 21,000 पे बैठा था उसने सेल किया, हालांकि वो लेबल क्या किया हुआ सपोर्ट, वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग प्राइस की वॉलेटिलिटी पे।
अब कई दफा प्राइस खुलती है आर में, तो R3 पे खुल गई, कई दफा न्यूज इतनी अच्छी आ जाती है कि प्राइस, तो R2 सपोर्ट बन जाएगा, R1 सपोर्ट बन जाए। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि ये ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही है, और इस वजह से वो जो इमेज आता है ना आपको टेलीग्राम में, वो इमेज इंपॉर्टेंट है कि जब वो करंट प्राइस की लाइन है, अगर तो उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है, अगर उससे ऊपर है तो वो सपोर्ट है। जब S2 का अलर्ट आया आपको, तो आपको जनरली लगता है कि S2 मेरी सपोर्ट होगी, लेकिन इमेज देख के लग गया नहीं नहीं ये सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है जी, क्योंकि अगर वो ऊपर ब्रेकआउट एग्जैक्टली ऊपर हो रही है हाँ तो फिर सपोर्ट है। वो जो व्हाइट, वो जो आपको लाइन आ रही है टेलीग्राम में, वो आपको बता देती है ये सपोर्ट है, ये रजिस्टर। और अगर वो ब्रेक करके ऊपर जाती है तब फिर हम बाय में रहेंगे, लेकिन अगर ऐसे अगर नीचे जा रही है फिर ये हम sell सेल में ये मिड बैंड वाले ट्रेड शुरू हो जाएंगे। हाँ। यस, मैं उनसे डेवलपर से कह देता हूँ कि हेलो जी क्या S1 लिया, S2 लिया सीगा ते 930 थे, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं पता लग गया सी वो बेस बना ली उन्हें, बन गया जी। आज मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं। चलो फ्राइडे वही ना बेटा पिक करता हूँ मैं भी। लेकिन अलर्ट का फायदा हो गया सर, टोंक करके फौरन मैं हूँ डेवलपर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦੇ, ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ए सपोर्ट कम करना है या एज ए रेजिस्टेंस। तो अनु फिर लॉन्ग या शॉर्ट था ऑलरेडी, देखिए अगर आपने सेल किया होता वो जो मिड बैंड से आपके बन गए पॉइंट, ठीक है मैंने किया कुछ नहीं लेकिन बता रहा हूँ वो फिर उस मिड बैंड पे आई, प्राइस नीचे आई टॉप ऑफ द बार, और हाँ, अब वो यस नहीं अभी तो ये सपोर्ट की तरफ जा रही है। या उस पे सेल किया होता तो पैसे बन गए। यस, क्योंकि आपको बेसिक यही बताया हुआ है कि ग्रीन टू बाय रेड टू सेल, दोनों चार्ट ग्रीन हो बाय करें, दोनों चार्ट रेड हो सेल करें। से आ गया मिड पॉइंट से, अब मैं इस पे बाय करता हूँ तो क्या होगा? नहीं हो, आपका नुकसान होगा, नीचे लाइन आ रही है तो वो विंड बैंड तोड़ देगा, ये पॉसिबिलिटी है। All right, see you guys. Went up 25, 33 points one time, right? इस वजह से ये मैंने मिड बैंड नहीं लेना था, क्योंकि उसकी डाइवर्जेंस की लाइन थी नीचे व्हाइट लाइन आ गई। हाँ, तो वो आपको कह रही है कि मेरा ट्रेंड शायद चेंज हो जाए। अब now it's we have to wait for the 30-20 to go green, then you start buying on the mid band. हाँ जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैं रैप, ये बिल्कुल रैप, ओके शट डाउन एवरीथिंग।